What are these climate change organizations? To begin with, the most important climate change organization is UNFCCC. What is UNFCCC? It is United Nations Framework Convention on Climate Change. So it was a framework convention. It means the convention in which the basic framework of climate change related activities was decided. So it is one of the most important convention which was held in 1992. Okay. So convention is just this is a mechanism where different countries come together to discuss the climate change related issues, right? So what is UNFCCC? It is United Nations Framework Convention on Climate Change. Convention means it is a forum where different countries come together to discuss the issues related to climate change. Now, this is the international environmental treaty for reducing greenhouse gases. Obviously, climate change, what is the driving factor of climate change? The driving factor of climate change is greenhouse gases. So obviously, the objective of UNFCCC is to reduce the greenhouse gases, thereby reducing the climate change. It was adopted on 9 May 1992 and opened for signature at the Earth Summit at Rio, which is called as UN Summit Conference on Environment and Development. Very, very important. So in 1992, there was a summit which was being held in Rio, which is called as Rio Earth Summit. In other language, it is also called as UNCED, UN Conference on Environment and Development. Very, very important conference. याद रखना है. Both of these are the name of same conference. In this conference, UNFCCC was open for signature. So UNFCCC कहाँ पे sign हुआ था? It was signed in the Rio Earth Summit या UNCED. This framework sets non-binding limits on greenhouse emissions for the countries. So it gives some limits for the greenhouse gas emissions for the countries, but those limits are not binding. These are just the prescriptive limits. Just prescribe किया है कि आप ऐसे करो. Doesn't compulsory नहीं कि आपको follow करना है. Binding नहीं है. Example है, हम हमेशा बोलते हैं कि you should use public transport. But is it binding on you to use public transport? No, you can take out your own car also. But it is prescribed, it is suggested that you should use the public transport. Right? So therefore, you will see that this framework is not binding. It is not having any binding implications on the countries. Then it contains no enforcement mechanisms. There is no mechanism to enforce anything in this mechanism, right? So basically binding भी नहीं है. Binding नहीं तो obviously there is no need of enforcement mechanism. Enforcement mechanism means there is some mechanism to ensure that the whatever are the decisions taken, those are implemented. But obviously the decision taken or the limits on greenhouse gas are not binding. Therefore, there is no requirement of the enforcement mechanism. Got it? Now you will ask, sir, you said in the beginning that this is most important environmental convention, and now you are saying it is not binding, there is no enforcement mechanism, then why it is important? The reason is that instead of the enforcement mechanism, the framework have given an outline about how international treaties can be negotiated to specify the action towards the objective of UNFCCC. So you have to fulfill the objective of UNFCCC, that is reducing the greenhouse gases. For that, there is a outline given in which it is suggested that every year all the countries who are signatories to UNFCCC will come together, meet, discuss and negotiate the climate change actions. वो negotiate करेंगे कि climate change के regarding क्या क्या steps लेनी चाहिए. That is why it is very important, because it gave the provision of the protocols or agreements which will be the international treaties for the fulfillment of the objectives of UNFCCC. Therefore, this is how the UNFCCC works. What happened in UNFCCC 1992? There was a convention. In that convention, it was decided that there will be some limits on greenhouse gas emissions, but those limits were not binding, non-binding limits. And also there was no enforcement mechanism. Obviously, binding नहीं तो enforcement mechanism की जरूरत ही क्या है, right? There, but it was said in the agreement that there will be a framework which will give which will outline how the international treaties can be negotiated for fulfillment of the objective of UNFCCC. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Now
what is this objective? Towards the objective of UNFCCC. But what is the objective of this UNFCCC? The objective of UNFCCC is to stabilize greenhouse gas concentration in atmosphere at the level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. This is the official language. In simple terms, objective of UNFCCC is to reduce greenhouse gas emissions. Simple as that. So this is the objective of UNFCCC. So to fulfill this objective, there will be specific treaties or protocols which will be signed, about which the outline is given in this UNFCCC. Now याद रखना, हमने यहाँ पे देखा था UNFCCC was formed in the Rio Earth Summit or UN Conference of Environment and Development. This conference, which was held in 1992 at Rio de Janeiro, is one of the most important environmental summits. In this summit UNFCCC तो साइन हुआ ही था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एग्रीमेंट साइन हुए थे, वो आपको पता होना चाहिए. UNFCCC was signed for climate change, right? Climate change के लिए UNFCCC साइन हुआ था. इसके अलावा there were some more agreements were signed. One of them was CBD, Convention on Biodiversity. Convention on Biodiversity. This was signed for the protection of biodiversity. Right? So biodiversity के लिए CBD sign किया गया था. We will be discussing this in detail. Don't worry. Apart from that, there was one more agreement which was called as UNCCD, United Nations Conference to Combat Desertification. So this was to reduce the impact of desertification, increasing desertification को reduce करने के लिए UNCCD sign किया गया था. So all these documents were signed in the UNCED itself. Apart from that, there was also something called as Agenda 21. Agenda 21 were some of the targets regarding sustainable development. Sustainable development. So the diverse environmental issues were dealt in this Rio Earth Summit or UN Conference of Environment and Development, which included climate change, biodiversity, desertification, and sustainable development. So yaad rakhna, very, very important conference. So that is where what is written here: UNCCD, CBD, UNFCCC, Agenda 21, all were established in the Rio Earth Summit. Very, very important. Moving ahead, we saw the UNFCCC's objective is to reduce the greenhouse emissions. To reduce these greenhouse emissions, UNFCCC gave some non-binding targets, but it also provided a framework that there will be further negotiations and further protocols will be signed to ensure that the objective of UNFCCC is fulfilled. In that bid, to make sure that there is a mechanism for these periodic negotiations, something called as Conference of Parties was established. What is Conference of Parties? Conference of Parties is a set of nations who come together every year and who have signed the UNFCCC convention, right? They meet every year to discuss the climate change strategy. They are meeting from 1995. Okay? So Conference of Parties are all the countries who have signed the UNFCCC convention, who meet every year to discuss the climate change actions. Got it? यहाँ पे जो बात की गई थी कि the framework outlines how specific international treaties may be negotiated. So this framework includes something called as Conference of Parties. That is, all the countries who are signatory of UNFCCC will meet once a year and discuss certain protocols, discuss certain actions for ensuring that the objective of UNFCCC is fulfilled. And what is the objective of UNFCCC? The objective is to reduce the greenhouse gases. Now, याद रखना है, in 1995 first COP was held, first Conference of Parties. Since then, every year the COP is being held. So 1997 will be, देखो 95 first था, 96 second, 97 will be third COP, right? And so on. याद रखना एक exception है, 2020. From 1995 to 2019 हर साल COP हुई थी, but 2020 में नहीं हुई थी. This is the only exception. So due to COVID, this summit was cancelled. So 2020 की summit नहीं हुई थी. 2022 की जो summit हुई थी, that was in Sharmel-Sheikh, and 2023 latest summit जो थी, that was happened in UAE, Dubai. So latest summit जो हुई थी 2023 में, वो दुबई में हुई थी. This was the 28th Conference of Parties. ये 28th Conference of Parties थी. ठीक है? So आपको अगर पूछा गया कि 2010 में कौन सी Conference of Parties थी, तो you can just count.
95 में फर्स्ट थी, एंड सो 2000 तक 10 तक काउंट करते हो, यू विल गेट द नंबर ऑफ द COP. बस याद रखना है 2020 इज अ एक्सेप्शन. Now, apart from COP, there are some other operating mechanisms in UNFCCC. Obviously, COP is the most important mechanism, but apart from that, there are few more things that you should remember in terms of operating mechanisms. Those are COP is a all member countries, all countries who have signed UNFCCC meet in the conference of parties. But every year there are two more summits which are happening. What are those two more conferences that are happening? What are those conferences? First is CMP. It is the conference of countries who are party to the Kyoto Protocol. So there was something called as Kyoto Protocol, which was signed in 1997. So the countries who have signed Kyoto Protocol meet every year in CMP. And then there was the Paris Agreement, which was signed in 2015. All the countries who have signed Paris Agreement meet under something called as CMA. So याद रखना, COP is all countries, conference of parties. So all countries who are member of UNFCCC. CMP are parties to the Kyoto Protocol. देखो P protocol. So those countries who are party of Kyoto Protocol meet under CMP, and those countries who are party to the Paris Agreement meet under CMA. Got it? Moving ahead. Now, the most pressing issue in environment is the financing. ठीक है यार, सब करना है वगैरह वगैरह, लेकिन द पॉइंट इज दैट पैसे कहाँ से आएंगे, फ्रॉम वेयर द फंडिंग विल कम. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फंडिंग मैकेनिज्म्स फॉर द एनवायरमेंटल कॉजेस. सो the most important thing that you should know is global environment facility. Very, very important. It is a financial mechanism established under Rio Summit to help tackle planet's most pressing environmental problem. So whatever are the most pressing or most important problems in environment, to deal with this problem, global environment facility provides the finance. ठीक है? So this was established under Rio Earth Summit only. So यहाँ पे हमने Rio Earth Summit की बात की थी, यहाँ पे ये different mechanisms आए थे, इसी में there was establishment of this fund. Okay, financial mechanism was also established in this UNCED financial mechanism. क्या था इस फाइनेंशियल मैकेनिज्म का ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव था टू फाइनेंस द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्थ. सो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी क्या क्या प्रॉब्लम्स को डील करती है? फॉर एग्जांपल, ये करती है क्लाइमेट चेंज. ये मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स क्या है? क्लाइमेट चेंज, राइट. देन देयर इज बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन, राइट. देन देयर इज डेजर्टिफिकेशन, राइट. देन देयर इज पोल्यूशन, right. Then there is ozone layer depletion. So these are the most pressing environmental problems. ये सारे problems को fund करता है global problems को नहीं. The solutions of these problems are being funded by the global environment facility. It is managed by the World Bank. Fund under GEF is special climate change fund. इसमें से climate change के लिए जो fund है उसे बोलते हैं special climate change fund. ठीक है? GEF serve as the financial mechanisms for different pressing problems, which includes CBD. CBD is Convention of Biodiversity. तो यहाँ पे हमने बोला था biodiversity. UNCCD is for desertification. UNFCCC is for climate change, right. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants is for the pollution. Minamata Convention is again for pollution, mercury pollution के लिए, mercury pollution, right. Montreal Protocol is for ozone layer protection. So for all these 6 different initiatives, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड्स द फंडिंग. ठीक है? नेक्स्ट है ग्रीन क्लाइमेट फंड. ग्रीन क्लाइमेट फंड इज अ फंड एस्टैब्लिश्ड विद द फ्रेमवर्क ऑफ द यूएनएफसीसी. विद इन यूएनएफसीसी ग्रीन क्लाइमेट फंड एस्टैब्लिश किया गया है. इट इज एन ऑपरेटिंग एंटिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज. किसके लिए है? फॉर डेवलपिंग कंट्रीज in adaptation and mitigation practices to climate to counter the climate change. So due to climate change, there are certain issues which are getting created. Like for example, there are changes in rainfall patterns. There are increased disasters. To adapt to these climate change related phenomena and to mitigate means to reduce the impact of climate change, Green Climate Fund is established where फाइनेंस इज प्रोवाइडेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज. याद रखना है, ग्रीन क्लाइमेट चेंज फंड किसे फाइनेंस कर रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है? डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज एंड ऑल दीज कंट्रीज गेट द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम दिस ग्रीन क्लाइमेट फंड टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज. इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू रेज 100 मिलियन पर ईयर अप टू 2020. ठीक है? ये फिगर है.
It was formally established in 2010 and launched in 2011. 2011 में लॉन्च किया गया था. It is governed by something called as Green Climate Fund Board. इसके लिए एक बोर्ड है. It is based in Incheon, South Korea. कहाँ पे इसका ऑफिस? ऑफिस इज इन इंचॉन, साउथ कोरिया. देन इन मैराकेश COP7 जो हुई थी मैराकेश में, वहां पे एक एडेप्टेशन फंड डिक्लेयर किया गया था. एडेप्टेशन फंड वाज टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, अगेन यहाँ पे भी डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे भी डेवलपिंग कंट्री है, to build resilience and adapt to the climate change. What is resilience? Resilience means to make sure that the countries are not adversely impacted in light of the climate change. Example हम बोलते कि a building is earthquake resistance, yeah, earthquake resilient. What it means, if it is a earthquake resilient, it means even if there is an earthquake, the building will stay there, it will not collapse. So therefore the building is resilient to the earthquake, right? That is what we say. So similarly, adaptation fund is making the developing countries or helping the developing countries build resilience to the climate change. So even if there is climate change, it should not negatively impact the developing nations. That is the purpose of adaptation fund. So adaptation fund में पैसे कहाँ से आते हैं? The money is 2% carbon credit under the clean development mechanism of Kyoto Protocol. What is Kyoto Protocol? What is clean development mechanism? वो हम बाद में देखेंगे. Don't worry. For now, just remember the 2% of the money which is collected under CDM goes into the adaptation fund. ठीक है? यहाँ पे एक टेबल है. इस टेबल में सारे एक साथ आपको दिए गए हैं. ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ये कहाँ आया था? रियो अर्थ समिट में, राइट, 1992 में. इसका हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन डीसी में. ट्रस्टी कौन है? ट्रस्टी तीनों का वर्ल्ड बैंक है. वर्ल्ड बैंक. ठीक है. व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी का पर्पस क्या है? टू फाइनेंस द प्लैनेट्स मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. एनवायरमेंट के रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है उन्हें फाइनेंस करना. ठीक है. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी? To fund the climate, to fund the environment's most pressing problem. Which are the summits for which global environment facility provides funding? UNFCCC, right? UNFCCC में दो funds देखे थे हमने, special climate change fund and least developed countries fund. Then CBD, convention on biodiversity, it is for biodiversity, this was for climate change. Then UNCCD, UN conference to combat desertification, it is for desertification. Then Stockholm Convention on POPs and Minamata Convention on Mercury. This was related to the pollution. And then there is also Montreal Protocol, जो यहाँ पे टाइप नहीं किया गया है. Montreal Protocol. So Montreal Protocol किस लिए होता? Montreal Protocol was for the ozone layer depletion. Adaptation Fund. What is Adaptation Fund? Adaptation Fund is outcome of COP7 under the Kyoto Protocol. Kyoto Protocol के अंदर आता है Adaptation Fund, which was signed in 2001, right? It helps developing countries to build resilience and adapt to the climate change. नाम में है adaptation. So adaptation is resilience and adaptation to the climate change. किनको? For developing countries. याद रखना, ये जो दोनों था, तीनों एक्चुअली सारे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है. ठीक है. डेवलप कंट्री के पास सभी अगर पैसा लेके तो देगा कौन ना? अगर यूएसए भी पैसा ले रहा है, जर्मनी भी पैसा ले रहा है, तो दे कौन रहा है फिर, राइट? सो फंडामेंटली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस फंड is financed by the developed nation. Developed nations इसे finance करते हैं and this money is used in the developing nations. ठीक है. So to help developing countries build resilience to adapt climate change. Where adaptation fund is getting funding, it is getting 2% of the carbon credits under clean development mechanism of the Kyoto Protocol. Lastly, Green Climate Fund, it was signed in COP16 in 2010 in Incheon, South Korea. ठीक है. It is helping developing countries to reduce their ग्रीन हाउस गैस इमिशन. ग्रीन करना है आपको, क्लाइमेट ग्रीन करना है. क्लाइमेट ग्रीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम करने पड़ेंगे. सो इट सर्व्स द पेरिस एग्रीमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्लियर है? ये डायग्राम आपको अच्छे से करनी है. रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंफ्यूज नहीं होना है. थोड़ा सा अगर आप एक दो दिन बाद याद करेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज कि ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या था, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी क्या थी. तो यू नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. व्हेन यू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स यू विल गेट द क्लैरिटी. ठीक है. लेट्स मूव अहेड देन. नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल. इन यूएनएफसीसी हमने देखा था, देखिए यूएनएफसीसी वी सॉ दैट देयर इज नो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बट हाउ द इंटरनेशनल ट्रीटीज विल बी साइंड इज स्पेसिफाइड, राइट? So for this we saw there was something called as COP, that is all member countries coming together every year and discussing the climate change strategy, right? Under the in such discussions different outcomes were there. One of the most important outcome was Kyoto Protocol. Kyoto Protocol was basically adopted
in COP3 in 1997. So 1997 में क्योटो में मीटिंग हुई of the UNFCCC members, and under in this meeting something called as Kyoto Protocol was discussed and finalized. So it was adopted in 1997 and came into force in 2005. It operationalized the UNFCCC. Basically, this Kyoto Protocol is the one which started the UNFCCC's objective. वो objective fulfill करने का सबसे पहला step था Kyoto Protocol. What was the objective of Kyoto Protocol? It was to reduce greenhouse gas emissions. That is nothing but the objective of UNFCCC, right? Greenhouse gas emissions maybe focus was on CO2. It is binding on the developed countries to reduce emissions. Very, very important. UNFCCC was non-binding, if you remember, whereas Kyoto Protocol was binding, but only on developed countries. Very, very important. Let's say USA. For USA, it is binding, and for India, it is non-binding. You will say, why such things? Why it is only for developed countries? It is due to the principle of common but differential responsibility. Very, very important principle. What is common but differential responsibility? ऑलरेडी हमने पिछले एक लेक्चर में देखा था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिस्कस करते वक्त सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज कम करना, ओजोन लेयर को डिप्लेशन कम करना. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पीपल, ऑल द कंट्रीज टुगेदर. हाउएवर, some people have more responsibility than the others. Those countries who are involved in destruction of nature for long duration, for example, developed countries like USA, UK, France, Germany. So these countries have industrialized 200, 300 years ago, and they are doing the constant pollution from last 300 years. So obviously, it is their responsibility to take step forward for the environmental protection. Therefore, there is a common responsibility. Everyone is responsible, but developed countries are more responsible. उनकी responsibility ज़्यादा है compared to the developing countries. It is called as common but differential responsibility. It is manifested in different forms in different agreements. For example, when we saw Montreal Protocol, we saw that in Montreal Protocol, what is happening? Some countries which are developed are given less amount of time to phase out the ozone depleting substances as compared to the developing countries. Here in Kyoto Protocol, what is happening? Those countries who are developed, there are binding targets on them to reduce the greenhouse gas emissions, whereas the targets are non-binding on the developing countries. Got it? There were two most important mechanisms which were established in the Kyoto Protocol. Those were joint implementation mechanism and clean development mechanism. सबसे पहले joint implementation देखते हैं. Simple है. Let's say there is country A, which is a developed country. This is a developed country. Let's take example of USA. And then there is country B. This is again developed country. Developed country. Let's say this is Germany. Okay. So USA and Germany, these are two countries. Now USA wants to reduce its greenhouse gas emissions, right? It is binding on them to reduce the greenhouse gas emissions. For that, USA started a project in Germany. USA ने एक जर्मनी में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. जर्मनी में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया which will help reduce the greenhouse gas emission. So a developed country which is collaborating with another developed country for reducing the greenhouse gas emission is called as joint implementation mechanism. It will be called as joint implementation. Okay? Joint implementation mechanism. Got it? Then second is clean development mechanism. This developed country USA is building a project in country C. Right? यहाँ पे country C में एक project कर रहे हैं, which is a developing country. Developing country. For example, Bangladesh. So USA is building a project in Bangladesh, which is helping them reduce the greenhouse gas emission. Then this particular mechanism will be called as clean development mechanism. Simple. Got it? So if a developed country, यहाँ पे developed country रहेगा क्योंकि it is binding on the developed countries. So a developed country is implementing a project in another developed country. It will be called as joint implementation mechanism. Whereas a developed country implementing a project in developing country will be called as clean development mechanism. That is the only difference between these two. Got it? Agar country A, which is developed country, let's say USA is building a project in another developed country, let's say Germany, then it will be called as joint implementation.
Whereas if a developed country, let's say USA, is building a project which reduces greenhouse gas emissions in a developing country, let's say Bangladesh, then it will be called as clean development mechanism. Got it? सिंपल है. और एक बार देर आर सम डायग्राम्स ऑल्सो, मैंने कुछ डायग्राम ऐड किए नीचे नेक्स्ट स्लाइड्स पे, वहां पे और क्लियर हो जाएगा ये दोनों चीजें. ठीक है. नेक्स्ट है कार्बन ट्रेडिंग. Carbon trading, what is happening in carbon trading? Carbon trading is also called as emission trading. Emission trading are of two types. First is carbon credit. This is basically the exchange of carbon credit in a market. जैसे इंडिया में एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX करके मार्केट है, where the carbon trading is happening. It is first market in Asia to trade the carbon credits. What is the trading of carbon credit means? Let's say there are two companies, or let's say two countries, let's say USA and let's say Germany. So let's say USA was allowed to emit 100 tons of carbon dioxide. These are imaginary figures, okay? 100 tons of CO2. And Germany was also, let's say, allowed to emit, let's say Germany was allowed 90 tons. Yeah, chalo 100 hi pakad lete for simplicity. 100 tons of CO2, right? Now what has happened? USA emitted extra. USA emitted 120 tons. And let's say Germany emitted only 80 tons, right? So Germany emitted 20 tons less than what was allowed. So Germany will get 20 carbon credits. Germany को क्या मिलेंगे? 20 carbon credits. Why? Because इसको 100 टन अलाउड था, इसने 80 टन ही बर्न किया. तो ड्यू टू दिस 20 ton of deficiency, it will get 20 carbon credits. Germany can go in market and sell this 20 carbon credits. Obviously USA को 100 अलाउड था, इसने 120 टन बर्न किया है, तो USA will need to make sure that ये extra 20 tons वो कार्बन क्रेडिट खरीद ले. So USA will go in market and ये मार्केट में जर्मनी से जो 20 क्रेडिट्स थे वो खरीद लेगा. This transaction is called as carbon trading or emission trading. Got it? Next, the offset trading. Offset trading में USA, let's say USA wants to reduce the pollution. It will have some project in, let's say, इंडिया में एक प्रोजेक्ट वो बिल्ड करेंगे which is reducing the greenhouse gas emissions. Let's say USA 20 ton extra emission कर रहा था. It build a solar power plant in India which will reduce the greenhouse gas emission by 20 tons. So this project by USA in India will consider to offset the 20 tons extra that emissions done by USA. This is called as offset trading. Offset trading means क्या? कि there is a project which is at another location which is offsetting the excess greenhouse gas emissions. Simple as that. Got it? Let's move ahead. Let's understand this from the perspective of a diagram. What is international emission trading? High income countries is trading with high income countries, right? USA is trading with Germany. So this is nothing but the international emission trading. ठीक है. Clean development mechanism में क्या हो रहा है? Clean development mechanism में high, ये trading है. There is a difference between trading and these mechanisms. याद है ना? यहाँ पे क्या हो रहा था? मैं क्या बोल रहा था कि ये joint implementation है. Clean development mechanism में क्या हो रहा था? USA was building a project in Germany. आपको याद होगा मैंने ऐसे यहाँ पे एक डायग्राम ये किया था कि यहाँ पे है भी अभी कि प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है यहाँ पे. Whereas emission trading में क्या होता है? ट्रेडिंग में क्या हो रहा है? These two countries are trading the carbon credits. There is a difference between these two, right? So emission trading में क्या हो रहा है? A country who have above emission targets, it means that it was allowed to, let's say, emit 100 tons, but it has emitted 120 tons. So 20 ton excess emit किया है, इसने 20 ton less emit किया है. So this country will sell their excess credits in market. This country will purchase it. This is called as emissions trading. Then a clean development mechanism. Clean development mechanism में क्या हो रहा है? High income country, that is developed country, is funding a project. ये project है, funding a project in the developing country. And joint implementation में क्या हो रहा है? A developed country is funding a project in another developed country. So यहाँ पे हमने देखा था clean development में, let's say USA funding a project in Bangladesh, right? यहाँ पे USA funding a project in Germany. So that is the difference between joint implementation, CDM and emission trading. Clear है यहाँ तक? Moving ahead, यहाँ पे again एक फिगर है जिसमें आपको और क्लैरिटी होगी. Joint implementation में क्या हो रहा है? एक एडवांस कंट्री है which is financing or giving technology to emission project in the another advanced country, then it will get the emission reduction units. ठीक है? Emission reduction unit are nothing but the carbon credit जैसे units मिलते हैं. ठीक है?
जितने यूनिट मिलेंगे उतने एक्सेस इमिशंस करने की उनको परमिशन है बेसिकली। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है? एडवांस कंट्री इज फाइनेंसिंग अ प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। हियर आल्सो दे आर गेटिंग द क्रेडिट फॉर द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट। एंड लास्टली इमिशन ट्रेडिंग। इमिशन ट्रेडिंग में क्या हो रहा है? दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है, बाद में पढ़ लेना। यहाँ पे अगेन आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम। आप देखेंगे यहाँ पे एक अलग टाइप के डायग्राम है, यहाँ पे अलग टाइप के डायग्राम है, यहाँ पे अलग टाइप के डायग्राम है। रीजन इज दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सो रिवाइज इट थ्रू डिफरेंट डायग्राम्स। इमिशन ट्रेडिंग में क्या हो रहा है? ये एक इमिटर है ए, इसने एक्सेस ग्रीन हाउस गैस इमिट किया है, इतना अलाउड था। ये जो रेड लाइन है दिस वाज अलाउड, ठीक है, दिस वाज अलाउड। उसने इतना एक्स्ट्रा किया है, वेयर इमिटर बे ने इतना ही किया है। सो इसके पास ये इतना रिड्यूस किया है इसने जितना अलाउड था। लेट्स से दिस वाज 10 यूनिट्स, राइट, एंड इसने एक्सेस 10 यूनिट्स किए। तो व्हाट विल हैपन? दिस इमिटर बी विल सेल इट इन द कार्बन मार्केट एंड ये यहाँ पे परचेस करेगा। सिंपल एज दैट, दिस इज इमिशन ट्रेडिंग। देन हमने देखा था ऑफसेट ट्रेडिंग। ऑफसेट ट्रेडिंग में क्या हो रहा है? अ कंट्री इज इंप्लीमेंटिंग अ प्रोजेक्ट इन सम अदर लोकेशन, ठीक है, एंड गेटिंग द कार्बन ऑफसेट सर्टिफिकेट्स, ठीक है। This can be of two types. Offset trading can be of two types basically. It can be joint implementation where developed country is implementing a project in another developed country. It can be clean development mechanism where developed country is implementing a project in developing country. ठीक है। नेक्स्ट है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट वाज साइंड इन COP 21 इन 2015। सी, हम सारे एग्रीमेंट्स नहीं देख रहे। आपने देखा हमने 1995 में COP 1 हुई थी, वी हैव नॉट डिस्कस। 2 भी नहीं डिस्कस की, 3 की, 3 वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन बीच में हमने कुछ की, 7 की मैराकेश एडेप्टेशन फंड हमने डिस्कस किया। देन हमने 2010 वाली डिस्कस की, राइट, जहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड इस्टेब्लिश किया गया था। सो देयरफॉर वी आर नॉट डिस्कसिंग एवरी एग्रीमेंट इन डिटेल। तो कौन कौन से आपको करने हैं? आपको करने दो विच आर इंपॉर्टेंट, जो हम क्लास में कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हमें करने। बाकी तो मैं बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा, लेकिन आप एक एक लाइन में करके रखिए। COP2 1 लाइन में आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट था, बस एक लाइन में। तो आप एक पूरा एक लिस्ट ही बना लीजिए। COP1 एक टेबल बना सकते हैं, COP1 2 3 4 5 6 कहाँ पे लोकेशन एंड इंपॉर्टेंट इफ एनीथिंग। किसी में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो डैश कर दो, कोई कोई जरूरी नहीं लिखने का। बट देर आर फ्यू COPs विच यू शुड नो इन डिटेल, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल COP3 यू शुड नो इन डिटेल, पेरिस एग्रीमेंट यू शुड नो इट इन डिटेल, एंड रिसेंट COP जैसे COP27 पिछले साल की 2022 की एंड COP28 इस साल की, दिस टू यू शुड नो वेरी वेल, ठीक है। गॉट इट? Paris Agreement was signed in COP21 in 2015. See, it was very important agreement. It was considered कि 2015 का Paris Agreement will change the climate change scenario forever. Unfortunately, Paris Agreement failed to serve that hype. जितना हाइप पेरिस एग्रीमेंट के अराउंड क्रिएट हुआ था उतने अच्छे तरीके से पेरिस एग्रीमेंट इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, बट इट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क एग्रीमेंट, ठीक है, बिफोर साइनिंग। आफ्टर साइनिंग देयर वर मेनी डाइल्यूशंस। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है कि जो इतने सब्सटेंस नहीं उसमें। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल वाज वेरी बाइंडिंग, सो पेरिस एग्रीमेंट में वो टोन डाउन किया गया, ठीक है ना। पेरिस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल मींस लेट्स से 1800 में, 1800 में ग्लोबल टेम्परेचर जो था उसका उसके लेट्स से 1800 में टेम्परेचर वाज x। नाउ इन करंट सिचुएशन वी मस्ट इंश्योर दैट द ग्लोबल टेम्परेचर इज मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। लेट्स से अगर 1800 में एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री से था, तो करंटली इट शुड नॉट गो मोर देन 17 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग below 2 degree centigrade of the pre-industrial level, to pursue efforts for limiting temperature to 1.5 degree centigrade above. It means that see, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपको जनरली बोला जाता है कि आप डेली एक्सरसाइज करो, राइट, आप डेली एक्सरसाइज करो, लेकिन डेली पॉसिबल नहीं तो एटलीस्ट वीक में 2 बार करो। बोलते हैं ना ऐसे, सुना है ना आपने कि कोई भी चीज होती है कि यार आप शुगर कम बंद ही करो, आप शुगर खाओ ही मत, बिल्कुल शुगर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बट अगर खानी है तो लिमिट में खाओ, थोड़ी सी ही खाओ, राइट। हैव यू सीन सच काइंड ऑफ डिस्कशंस? ये सिमिलर है कि आपको
2 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मैक्सिमम, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाना ही नहीं है, बट इफ पॉसिबल 1.5 पे ही लिमिट करो, 1.5 के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इन पेरिस एग्रीमेंट समथिंग कॉल्ड एज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस वेर गिवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Intended nationally determined contribution, what it means, every country was asked to give their own assessment of how much contribution they will be doing to reduce the greenhouse gases. इंडिया बोलेगा कि हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करने के लिए ये चीजें करेंगे, यूएसए अपनी लिस्ट दे देगा, खुद देंगे, इट इज नॉट एक्सटर्नली बाइंडिंग। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल था, तो क्योटो प्रोटोकॉल में यूएसए इंडिया खुद नहीं डिसाइड कर रहे थे, इट वाज डिसाइडेड म्यूचुअली, एक एग्रीमेंट में डिसाइड किया था कि कौन सी कंट्री को कितना इमिशन अलाउड है। Whereas Paris Agreement में the countries are asked to declare their own targets, कि हर एक कंट्री अपना खुद का टारगेट डिक्लेयर करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज है, इट इज नॉट बाइंडिंग। मतलब क्या, लेट्स से आप गाड़ी चला रहे हैं, इट इज अप टू यू कि क्या क्या रूल्स करना है, कि कहाँ पे सिग्नल लगाना है, स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, वो सब आप डिसाइड करेंगे जो गाड़ी चला रहा है। एंड वो आप रूल ब्रेक भी कर सकते हैं, आप पे बाइंडिंग नहीं। अगर आपने वो लेट्स से आपने डिसाइड किया कि यहाँ पे सिग्नल लगेगा, आपने वो सिग्नल ब्रेक किया तो आपको फाइन भी नहीं लगेगा। Can you imagine how absurd it is? Therefore, it was considered as कि ये पेरिस एग्रीमेंट ने जो हाइप क्रिएट की थी, that hype was not served because the intended nationally determined contribution, that too non-binding. This is not very solid step to protect the environment. इससे environment protection के लिए जो solid काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। Moving ahead, डेवलप कंट्रीज, इसके अलावा क्या क्या डिसाइड हुआ डेवलपिंग इसमें पेरिस एग्रीमेंट में? तो पेरिस एग्रीमेंट में पहली चीज ये हुई थी डिस्कस, दूसरी ये हुई थी इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तीसरा डिस्कस हुआ डेवलप कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप कंट्रीज है, लेट्स से यूएसए इज रिक्वायर्ड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्री, लेट्स से बांग्लादेश, फॉर डिफरेंट थिंग्स। किस किस चीज में हेल्प करेंगी? पहला है टू रेज फंड, फंडिंग रेज करने के लिए हेल्प करेगी। दूसरा है टू एड एफर्ट्स टू मिटिगेट एंड अडेप्ट द क्लाइमेट चेंज। एंड तीसरा है हेल्प ट्रांसफर द क्लीन टेक्नोलॉजी। जैसे लेट्स से यूएसए ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है विच इज रिड्यूसिंग द इमिशंस, लेट्स से उन्होंने सोलर पावर पैनल की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, तो यूएसए विल गिव दिस टेक्नोलॉजी टू बांग्लादेश, ठीक है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच वेर गिवन इन द पेरिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट है फोर्थ है ग्लोबल स्टॉकटेक। इट इज अ पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म, हर 5 साल में होगा, established under Paris Agreement to assess the efforts of countries to reduce GHGs। आपने INDCs दिए, अब इस INDC के बाद क्या हुआ, इस INDCs पे काम हुआ क्या, where these INDCs implemented, what are the efforts taken to reduce the greenhouse gas emissions, उसका क्या सक्सेस रहा, क्या फेलियर रहा, इसका एक पीरियोडिक असेसमेंट होगा। दिस पीरियोडिक असेसमेंट विल बी आफ्टर एवरी 5 years अंडर पेरिस एग्रीमेंट विच इज कॉल्ड एज ग्लोबल स्टॉकटेक। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर अबाउट पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। देखो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ, जैसे पेरिस एग्रीमेंट अगर पढ़ाने बैठे तो 1 घंटा भी पढ़ा सकते हैं, बट हमें पीएचडी नहीं करनी इनमें, हमें बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव अहेड नाउ। हमने यहाँ पे इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की। सो दिस कॉन्ट्रीब्यूशंस आर डिसाइडेड बाय द कंट्रीज देमसेल्व्स, राइट। व्हाट वर द आईएनडीसीज डिसाइडेड बाय इंडिया देन? इंडिया के क्या आईएनडीसीज थे? तो इंडिया आईएनडीसी, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आईएनडीसीज आई हैव गिवन हियर, बाकी आप लिस्ट सारी एक बार नेट से देख लेना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन आईएनडीसीज इंक्लूड्स टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% इन 2030। सो 2005 में जो इमिशन इंटेंसिटी थी उसके 45% रिडक्शन करना है 2030 में। व्हाट इज इमिशन इंटेंसिटी? इमिशन इंटेंसिटी क्या होता है वो समझ लीजिए पहले। इमिशन इंटेंसिटी इज emissions divided by GDP. What it means? It means if you are adding 1 unit of GDP, अगर आप 1 unit of GDP ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए how much emissions you are doing, the amount of emissions which are being done for adding 1 unit of GDP. Obviously GDP ऐड कर रहे हैं मतलब क्या, you are increasing your industry, you are increasing your agriculture, you are increasing your development activities. So obviously if you are increasing the number of industries, agriculture increase कर रहे हैं तो वहां से क्या होगी, emissions होगी, right. So whenever you are increasing the GDP, you are increasing the emissions as well, simple as that, right. Therefore ये जो इसे बोलते हैं, ये 1 यूनिट जीडीपी के लिए आप कितना इमिशन कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं इमिशन इंटेंसिटी। तो यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ कि लेट्स से
2005 में 1 यूनिट जीडीपी के लिए 100 kg CO2 फॉर एग्जांपल इमिट हो रहा था। फॉर एग्जांपल के लिए एक फिगर है। आपको ये इमिशन इंटेंसिटी ये कहा था 2005 में। आपको 2030 में क्या करना है? इन 2030 यू वांट टू रिड्यूस दिस 100 kg बाय 45%। 100 kg से 45% रिड्यूस किया, मतलब कितना रहेगा? 65 kg, सॉरी 55 kg। ठीक है। सो जिस यहाँ पे हमें 1 यूनिट जीडीपी प्रोड्यूस करने के लिए 2005 में अगर 100 kg CO2 इमिशन कर रहे थे, तो नाउ वी हैव टू रिड्यूस इट टू द 55 kg। सो ये रिडक्शन कितना हुआ? 45% का। सो द रिडक्शन शुड बी ऑफ द 45%। गॉट इट? सो पहला टारगेट क्या है? टू रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45%। सेकंड है अचीव अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्या होती है? दिस इज नथिंग बट रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी। सो वी वांट टू अचीव 50% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। करंटली हम लगभग 35% के अराउंड है, 35-40% के अराउंड है। ठीक है। सो इन इंडिया करंटली 35% ऑफ द एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी। वी वांट टू इंक्रीज दिस टू 50% बाय 2030। नेक्स्ट है to create additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2 through additional forest by 2030. See, you know that for पहली चीज तो ये याद रखो, if you want to reduce the greenhouse gases अगर आपको reduce करने तो there are two ways। कौन से two ways हैं? पहला है reduce emissions ही reduce करो। आप आपके इंडस्ट्रीज से जो इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करो, राइट। एंड दूसरा है collect the emissions already in environment, collect the emissions। So you know that there are already a lot of emissions in environment, we want to collect those, right? So these are the two ways by which greenhouse gases can be reduced in the atmosphere। So ये यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? We are trying to reduce the emissions that are there। It may be through emission intensity, it may be through renewable energy। Obviously renewable energy से less कैसे होगा? If there is a solar power plant, then आप कोल कम बर्न करेंगे, कोल कम बर्न करेंगे तो emission कम होगा, right? So in this first two targets we were focusing on reducing the emissions। in this third target we are focusing on the capture of the emissions that are already present in the nature में already जो capture कार्बन डाइऑक्साइड है या emissions है उन्हें capture करना है। how? by building the carbon sink using afforestation। आपको पता है ट्रीज आर द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज, जिसे कार्बन सिक्विस्ट्रेशन भी बोलते हैं। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन व्हाट इट मींस? इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग स्टोर्ड इन द प्लांट्स, राइट? क्यों? क्योंकि प्लांट इज यूजिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो नेचर से कैप्चर कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। सो देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू ऐड द कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons through additional forest by 2030। so this is our third target। नेक्स्ट टारगेट है, इन टारगेट्स में कुछ नंबर्स थे, कुछ फिगर्स थे। नेक्स्ट फ्यू टारगेट्स आर अबाउट दी नॉन ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव डायमेंशंस, जिसे हम बोलते हैं कि जैसे अवेयरनेस स्प्रेड करना वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीजें बाकी ऑब्जेक्ट INDCs में दी गई है। जैसे यहाँ पे प्रोपोगेट अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडरेशन। ट्रेडिशनल वैल्यू हमारी कंजर्व करो, मॉडरेशन में यूज करो। आपको 4 कपड़ों की जरूरत है तो 4 ही लो, 40 मत लेके रखो घर में, राइट? सो मॉडरेशन, कंजर्वेशन, नेचर के साथ सिंक में रह के चीजें करो। सो दीज आर बेसिकली द सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ठीक है। सो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। देन adopt a climate friendly and cleaner path of economic development। so for economic development we need to adopt something which is climate friendly and clean path। ठीक है। so economic development can be done by both ways। it can be by harming the environment and it can be by protecting the environment। example है, you have to set up a industry। आप एक इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं तो आप इस इंडस्ट्री में एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ला सकते हैं। जैसे इस इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी आप लेट से कोल से ले सकते हैं, या दूसरा एग्जांपल है आप ले सकते हैं यूजिंग सोलर पावर प्लांट। सो ऑब्वियसली ये जो सोलर पावर प्लांट वाला है, इट इज क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो सच climate friendly and cleaner path of economic development shall be adapted। that is the next INDC of India। moving ahead,
Next is Talanoa Dialogue. It was conceptualized in COP23 in Bonn, Germany. Talanoa Dialogue is a process designed to help countries implement and enhance their nationally determined contributions. हमने देखा ये INDCs जो है, these INDCs, these are non-binding and countries themselves are deciding. So मैं खुद को क्यों ज्यादा लोड लूंगा ना? I will. Why the countries shall take extra efforts? What is the motivation for them? There is no motivation. Therefore, in Talanoa Dialogue, there was a effort to इम्प्लीमेंट एंड एनहांस द एनडीसीज. एनडीसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड एनहांस करने के लिए एक प्रोसेस सेट की गई थी इन तालानोआ डायलॉग. व्हाट इज तालानोआ डायलॉग? सी तालानोआ डायलॉग जो फिजी के जो आइलैंड्स होते हैं, फिजी आइलैंड्स आपको मैप पे देखेंगे. अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में ऊपर फिजी के आइलैंड्स हैं. तो फिजी आइलैंड्स, यहाँ पे क्या होता है इन आइलैंड्स में? देयर आर मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज हु आर लिविंग and these tribal communities have something called as Talanoa Dialogue. So what is Talanoa Dialogue? Talanoa Dialogue is kind of storytelling. See, कभी आप किसी को फैक्ट से शायद कन्विंस ना कर पाए, फिगर से कन्विंस ना कर पाए, बट यू कैन कन्विंस दैट पर्सन थ्रू स्टोरीज, राइट? देयरफॉर यू विल सी, अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में फैक्ट्स वगैरह तो दे रहे पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज विच आर बीइंग फ्लोटेड. आप देखिए अलग अलग स्टोरीज, एड कैंपेन देखिए. एड में क्या हो रहा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की औरत है, वो बता रही है कि गैस सिलेंडर कैसे महंगा हुआ है, कांग्रेस की एड, राइट? एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, वो बोल रही है कि कैसे वो फॉरेन कंट्री में अटक गई थी और कैसे मोदी गवर्नमेंट ने उसको वापस लेके आए. अगेन अ स्टोरी, राइट? सो इन दीज एड्स आर दे यूजिंग सम फिगर्स? उनके पास फिगर्स नहीं क्या? कांग्रेस के पास फिगर्स नहीं क्या कि सरकार के 10 साल में क्या क्या फेल्यूर्स है? या मोदी जी के पास फिगर नहीं क्या कि सरकार के 10 साल में क्या क्या सक्सेसेस है? बट यू विल सी व्हेनेवर देयर आर एड कैंपेन्स, stories are being used rather than the facts and figures. Why? Because stories are effective way to convince someone, right? So storytelling is considered as a powerful tool in communicating your point. ठीक है, आपका पॉइंट कम्युनिकेट करने के लिए स्टोरीज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट productive medium. So after Talanoa Dialogue, next concept is gender action plan. So what is gender action plan? Gender action plan is basically plan for the gender responsive climate policy. See, याद रखना, whenever there are climate change or any disasters, women are facing more problems as compared to the men. इसे vulnerable sections, not only women actually, vulnerable sections always face more problems whenever there is a problem. Vulnerable sections. आपको एक केस स्टडी पता होगी, यूपीएससी ने पीछे एक केस स्टडी पूछी थी कि लेट्स से देयर आर सम पीपल स्ट्रैंडेड एट पर्टिकुलर प्लेस, आप वहाँ के डीएम है, तो आप किस ऑर्डर में लोगों को निकालोगे? तो वहाँ पे ओल्ड मैन है, वहाँ पे वुमन है, वहाँ पे चिल्ड्रन है, वहाँ पे यंग लोग है, तो आप किसको किस ऑर्डर में निकालेंगे? तो आप जनरली आप देखते हैं कि जनरली ओल्ड एज पीपल, वुमन, इनको पहले रेस्क्यू किया जाता है, बाद में बाकी लोगों को किया जाता है. क्यों? क्योंकि दिस पीपल आर मोर वल्नरेबल. पीछे एक केस हुई थी, आई डोंट नो आपको पता है नहीं, 6-7 साल पहले की बात है. नेपाल में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, एंड उस अर्थक्वेक के बाद देयर वर मेनी केसेस ऑफ रेप ऑफ द वुमन, क्योंकि अर्थक्वेक आया था, सब जगह पे केओस था, एंड इन दैट केओस मेनी वुमन वर रेप, राइट? सो ऑलरेडी एक डिजास्टर है, डिजास्टर में एक एडिशनल डिजास्टर उनके लिए हो जाता है क्योंकि दे आर वल्नरेबल, राइट? सो देयरफॉर देयर नीड्स टू बी सम climate policy which is gender responsive. Such kind of gender action plan was discussed in Talanoa Dialogue. ठीक है, मूविंग अहेड. सी, आप ये चीजें है ना, आप आपके बाकी जगह पे भी यूज करना सीखो हमेशा. अभी आपका मेंस नहीं, लेकिन अभी से बता के रखता हूँ. जैसे कि लेट्स से तालानोआ डायलॉग है, तो आपको अगर कोई केस स्टडी है, केस स्टडी में लेट्स से बताया गया है कि एक इंडस्ट्री है, उससे पोल्यूशन हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, तो व्हाट विल यू डू? तो यू कैन से कि आई विल ask the management of company to sit with the local villagers, and local villagers will tell their stories to the management, and maybe that management will be able to appreciate the fact, and they themselves will take some actions to reduce the pollution. आपको फाइन करने की या फिर आपको झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं हर बात पे, राइट? सो सच काइंड ऑफ जो अप्रोच रहेगा ना, वो अप्रोच आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, नेक्स्ट है COP27. This is Sharmel-Sheikh in Egypt. It happened in Sharmel-Sheikh in Egypt. It agreed to create loss and damages fund. Very very important. हमने ऑलरेडी 2-3 फंड देखे थे. हमने ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी देखी थी,
हमने एडेप्टेशन फंड देखा था, हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड देखा था। सो ये ऑलरेडी हमने कुछ फंड देखे थे। इसमें एक नया फंड ऐड हुआ है पिछले साल, विच इज लॉस एंड डैमेजेस फंड। व्हाट इज लॉस एंड डैमेजेस फंड? सी, देयर आर मेनी कंट्रीज हु आर वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज। वल्नरेबल कंट्रीज, लेट्स से एग्जांपल इज श्रीलंका। श्रीलंका, सो आप देखिए ये श्रीलंका है। श्रीलंका में लेट्स से यहाँ पे डिजास्टर हुआ। ये डिजास्टर क्यों हुआ? ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। ड्यू टू दिस डिजास्टर देयर आर मेनी लॉसेस इन दिस प्लेस। यहाँ पे बहुत सारे लॉस हुआ, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ, राइट। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस? पूरा दुनिया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया की वजह से हो रही है। बट हु इज सफरिंग फ्रॉम दैट? द वल्नरेबल कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम दैट। देयरफॉर this country should be compensated for the loss due to the climate change related disaster. That is the objective of loss and damages fund. It compensates the most vulnerable countries for their losses due to the climate related disasters. Simple. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हुई थी। उसके बाद है 5-year program was launched to promote climate technology solutions in developing countries. So in developing countries there should be technology solutions to deal with the climate change. ठीक है, better technologies. Next है Sharmel-Sheikh adaptation agenda outlines 30 adaptation outcomes to enhance resilience. क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? To enhance the resilience of the countries to the climate change. फोर्थ है एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव, अवेयर करके एक इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया था। फिफ्थ है अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। दिस इज नथिंग बट द कार्बन मार्केट फॉर अफ्रीका। हमने कार्बन मार्केट्स की कॉन्सेप्ट देखी है। इंडिया में हमने देखा एमसीएक्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग होती है। तो सिमिलरली कार्बन मार्केट नीड्स टू बी डेवलप्ड इन अफ्रीका। फॉर दैट अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड। नेक्स्ट है ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस। दिस इज द अलायंस फॉर इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वे आर डिस्कस इन द शर्मेल-शेख, that is Egypt, COP27. Do you have to learn all of these? No, you just have to read it 2-3 times. क्या? Loss and damages fund, climate technology solutions, adaptation agenda, aware, African carbon market, global renewable alliance. बस 3-4 बार पढ़ के रखो, जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप टैकल कर पाएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, नेक्स्ट है COP28. इट हैपेंड इन दुबई, UAE. ठीक है, दुबई में ये हुई। दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक टेक्स्ट। आपको याद होगा हमने पेरिस एग्रीमेंट में देखा था, पेरिस एग्रीमेंट में हमने देखा था कि एवरी 5 years there will be global stocktake. What it means? There will be the review of the efforts in terms of Paris Agreement. Paris Agreements में कंट्री ने क्या किया उसका रिव्यू होगा एवरी 5 years, which was decided in the Paris Agreement. तो पेरिस एग्रीमेंट में ऑब्वियसली पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ, लेकिन ये ऑपरेशनलाइज होते होते 2018 आ गया था। तो 2018 से 5 साल बाद, 18 या 19 में, 2018 के 5 साल बाद, दैट इज 2023 में। तो 2023 में दिस इज द फर्स्ट रिव्यू। तो COP28 2023 वाला, दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक टेक्स्ट. It is basically to assess individual countries' effort to reduce greenhouse gas emissions and transition to the renewable energy under Paris Agreement. Got it? नेक्स्ट है, ये सबसे पहली चीज हुई थी इस साल मतलब 2023 दिसंबर में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट है ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू अचीव नेट जीरो बाय 2050। सेकंड थिंग, पहली तो ग्लोबल स्टॉकटेक टेक्स्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया। दूसरा चीज है ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स के लिए कुछ बातें की गई, जिसमें कहा गया कि वी नीड टू अचीव नेट जीरो बाय 2050। व्हाट इज नेट जीरो? सिंपल है, लेट्स से पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, अर्थ मिला के हर साल 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रही है। ठीक है, नाउ व्हाट वी वांट टू डू बाय 2050, 2050 में क्या होना चाहिए? लेट्स से 1 बिलियन या 2 बिलियन था फॉर एग्जांपल। बाय 2050 में क्या होना चाहिए? ये तो हमें रिड्यूस करना है। लेट्स से 1.5 बिलियन टन हमने CO2 इमिट किया, एंड we should also capture this CO2, right, through trees, through afforestation, through carbon sequestration, through geoengineering. We need to capture the amount equivalent to which is being emitted. So net emission कितना होगा, net कितना ऐड हुआ है? So 2049 और 2050 फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे 2049 में अगर टोटल
10 बिलियन टन अगर CO2 है फॉर एग्जांपल, तो 2050 में भी 10 बिलियन इंक्रीज, राइट। सो इट इज कॉल्ड एज नेट जीरो इमिशन। नेट जीरो मतलब बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, नेट जीरो मतलब इमिशन जीरो करना, नहीं, जीरो डजंट मीन इमिशन जीरो करना। नेट जीरो मतलब आप उतना ही इमिशन करो जितना आप कैप्चर कर पा रहे हैं। गॉट इट? देयर इज वन कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ हु इज एट नेट जीरो। डू यू नो द नेम ऑफ दैट कंट्री? इट इज प्रैक्टिकल थिंग, ऐसा नहीं कि इम्प्रैक्टिकल है। एक कंट्री है अभी दुनिया में जो ऑलरेडी नेट जीरो पे है। यस, इट इज भूटान। सो भूटान इज एट नेट जीरो राइट नाउ। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आई नेट जीरो की क्या होती है। नेक्स्ट है ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन। सो दिस इज to enhance the adaptive capabilities and minimizing the vulnerability for the sustainable development. So we want to do the sustainable development. For sustainable development, we need to adapt, we need to increase our capabilities, we need to reduce the vulnerability. For there was a global goal on adaptation. See, adaptation की बात हर जगह पे किया जाती है, यहाँ पे शर्मेल शेख में भी adaptation की बात की गई है। Why? Because see, global climate change हो रहा है, that is the fact. No matter how much we try to control, climate change होगा। Now what to do? The solution is to adapt. We need to adapt to the climate change. Therefore adaptation की बात again and again की जाती है। How this global goal on adaptation is going to enhance the capabilities by doing two things. First है call for doubling the adaptation finance. आपको पता होगा adaptation finance की concept थी, तो adaptation finance को increase करना है, double करना है। ठीक है, moving ahead. Second है explicit 2030 date has been integrated into text for targets on water security. See, इसके अलावा अभी तक हम ज्यादा जो मैक्सिमम बातें जो कर रहे थे वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, लेकिन COP28 में क्लाइमेट चेंज के जो अदर फैसेट्स हैं, इमिशंस के अलावा जो फैसेट्स है उस पर भी बात की गई है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन, वाटर सिक्योरिटी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, हेल्थ, इन तीनों के स्पेसिफिक टारगेट सेट किए गए हैं विद द डेट ऑफ 2030। ठीक है, सो दीज आर द टू थिंग्स अंडर ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन। नेक्स्ट है लॉस एंड डैमेजेस फंड। यू नो दैट लॉस एंड डैमेजेस फंड वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर COP27। मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था, आप जाके कार देख के आते हैं, उसी दिन कार खरीदते क्या? नहीं, आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं, आप नेगोशिएशन करते हैं, एंड देन में भी 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप कार खरीदते हैं, राइट। सिमिलरली लॉस एंड डैमेजेस फंड सबसे पहले डिस्कस किया गया था COP27 में, उस पर फिर पूरा साल डिस्कशन हुआ, कुछ डिबेट्स हुई, एंड अल्टीमेटली इन COP28 द एग्रीमेंट वाज रीच्ड एंड ऑपरेशनलाइज। इसका जो ऑपरेशनलाइजेशन हुआ ये इस साल हुआ है। ठीक है, इट विल बी मैनेज बाय वर्ल्ड बैंक। पहले भी हमने जो फंड देखे थे वो सारे वर्ल्ड बैंक मैनेज कर रही थी, एंड इवन लॉस एंड डैमेजेस फंड इज बीइंग मैनेज बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी इफिशियंसी। देखो, ग्लोबल रिन्यूएबल्स एनर्जी इफिशियंसी प्लेज, तो प्लेज ली गई है, देयर इज अ प्लेज एट ग्लोबल लेवल रिगार्डिंग रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी इफिशियंसी। व्हाट आर दीज प्लेजेस? फर्स्ट पेज इज to commit to work together to triple the world's installed renewable energy generation capacity by 2030. Let's say current जो global installed renewable capacity है वो है X megawatts. So we want to increase this to 3X megawatt by 2030. So in next 6 years we want to triple the renewable energy generation capacity. This is the first pledge. ठीक है, pledge है, this is not compulsory or binding, this is just a pledge, commitment. ठीक है, second commitment क्या है? To collectively double the global average annual rate of energy efficiency improvement from 2% to the 4%. It means that see energy efficiency बढ़ रही है. What it means? देखो, पुराने जो बल्ब्स थे, इफ यू रिमेम्बर, दो वो येलो कलर के बल्ब्स आते थे, दैट यूज्ड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? यस और नो? वो येलो कलर के बल्ब्स थे, राइट? देन दीज बल्ब्स वेर रिड्यूस्ड बाय CFLs। कुछ 15-20 साल पहले CFLs आए, और फिर अभी 5-7 साल पहले देयर आर समथिंग कॉल्ड एज LEDs। सो पहले आपको अगर एक रूम में बल्ब लगाना है तो लेट्स से आपको महीने में 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, बाद में वो लगने लगी मे बी 70 यूनिट्स, अभी लगती है वो लेट्स से 20 यूनिट्स। सो व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज इंप्रूवमेंट इन एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी इफिशियंसी बढ़ रही है। सो दिस एनर्जी इफिशियंसी अभी जो बढ़ रही है दैट इज इंक्रीजिंग एट 2% एवरी ईयर। मतलब क्या? अगर एक फ्रिज है, आपको इस फ्रिज को चलाने के लिए 2023 में 100 यूनिट लग रहे थे, तो 2024 में इसे आपको 98 यूनिट्स लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज द इंप्रूवमेंट ऑफ 2% इंप्रूवमेंट इन इफिशियंसी। दिस इज द करंट रेट। नाउ वी वांट टू हैव द रेट ऑफ 4%। मतलब क्या? 2023 में 100 था, तो इस साल 96 यूनिट में ही काम होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग।
सो सेकंड क्या है, कलेक्टिवली डबल द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट फ्रॉम 2% to the 4% every year until 2030. How it will be done? It will be done by improvements in technology. जैसे आपको आपके फ्रिज पे एसी पे लिखा होता है 3 स्टार 4 स्टार, व्हाट इट मीन्स, जितने ज्यादा स्टार उतनी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी. सो एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा क्यों होगी? इफ देयर इज सम टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट. सो दैट इज व्हाट इज द objective of energy efficiency pledge, to improve the energy efficiency from 2% yearly to the 4% yearly. ठीक है. नेक्स्ट है, सो यहाँ पे 3 प्लेज हुए हैं, एक है रिन्यूएबल प्लेज, दूसरी एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज एंड तीसरी है ग्लोबल कूलिंग प्लेज. ये जो प्लेज थी, इट इज डन बाय ऑल कंट्रीज. ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज सारी कंट्रीज में ली है. अपार्ट फ्रॉम दैट 66 कंट्रीज हैव आल्सो committed something called as global cooling pledge. In this, countries committed to working together to reduce cooling related emissions. Cooling related emissions means emissions from the refrigeration industry, fridge, ACs. इससे जो emissions होते हैं, these emissions reduce करने का pledge किया है by at least 68% globally as compared to the 2022 level in 2050. So 2050 में जो emissions रहेंगे, that should be 68% less as compared to in 2022. That is what the global cooling pledge is. ठीक है. क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रिपल द रिन्यूएबल एनर्जी, राइट. एनर्जी एफिशिएंसी 2% से 4% एफिशिएंसी बढ़ाना ईयरली. एंड ग्लोबल कूलिंग पेज क्या है? रिड्यूसिंग कूलिंग रिलेटेड इमिशन बाय 68%. सो दीज आर द प्लेजेस दैट यू शुड रिमेंबर. Renewable and energy efficiency pledge is taken by all the countries, whereas global cooling pledge is taken by 66 countries. Next है declaration to triple nuclear energy. There is a declaration in this COP where they are trying to triple the nuclear energy. So nuclear energy is again clean energy. It is a clean energy. Nuclear energy से कोई आपको emissions नहीं मिलते हैं. So we want to increase nuclear energy as well by 2050. Triple करनी है. Green credit mechanism. It is a mechanism to incentivize voluntary pro-planet actions launched by India and UAE. Very very important. ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है. इट इज लेड बाय इंडिया. सी, आपने ऑलरेडी मैकेनिज्म देखा है विच इज कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म. कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म. व्हाट इज हैपनिंग इन कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म? कंट्रीज आर ट्रेडिंग द कार्बन, टू कंट्रीज आर ट्रेडिंग द कार्बन इफ देयर आर गैप इन इमिशन रिडक्शन. हमने देखा था यूएसए 100 अलाउड है, 120 टन इमिट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो इट विल हैव टू गो टू द मार्केट एंड परचेस द carbon credit worth the 20 ton extra emission that it is doing, right? Similarly, there needs to some incentive for other actions, other plan. ये तो सिर्फ carbon credit is just for the emissions, but what about other issues like for example water conservation, for soil improvement? For such thing also there needs to be there needs to be a market like carbon market. Such market will be called as green credit mechanism. It replicates the carbon credit mechanism for environmental actions like water conservation and soil improvement. Got it? तो इसमें ये exactly कैसे वर्क होगा ये अभी तक फाइनल नहीं है. हमने जैसे देखा था लॉस एंड डैमेजेस फंड 2023 में 22 में आया और उसका फाइनलाइजेशन 2023 में हुआ. सिमिलरली ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म 2023 में आया. इसका कुछ हाउ इट विल वर्क, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म, ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो हमें भी पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा. बट it will be on lines of carbon credit mechanism. जैसे क्या होगा? Every country will have some targets of water conservation. जो कंट्री टारगेट फुलफिल कर रही है उनको क्रेडिट दिए जाएंगे, जो नहीं कर रही है उनको मार्केट में जाके खरीदने पड़ेंगे. सो सम सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. समथिंग लाइक दिस कैन बी डेवलप्ड फॉर अदर एनवायरमेंट रिलेटेड एक्शंस सच एज वाटर कंजर्वेशन एंड सॉइल इंप्रूवमेंट. गॉट इट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म याद रखना है. इंडिया एंड यूएई दोनों ने मिलके इसको लॉन्च किया है. नेक्स्ट है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस. इट इज लॉन्च्ड at COP28 by National Mission for Clean Ganga under Ministry of Jal Shakti, Government of India. Again very very important. So India ने two different mechanisms यहाँ पे propose किए. एक है ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म एंड दूसरा है ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस. राइट, रिवर सिटी अलायंस किसने? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. ऑब्वियसली हमारे यहाँ इंडिया में जो रिवर सिटीज के लिए सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? दैट इज बीइंग डन बाय National Mission for Clean Ganga under Ministry of Jal Shakti. It highlights India's role in sustainable river-centric development and climate resilience. Very, very important. So development needs to be river-centric. River needs to be non-polluted. River needs to be taken into consideration while developing any policies, etc. The platform will facilitate knowledge exchange, river city training, and dissemination of best practices. ठीक है.
अगर इंडिया में कोई चीज अच्छी कर रही है और वो काम कर रही है, इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस, देन इंडिया विल disseminate information about that practice to all across the world. Knowledge exchange, let's say अमेरिका कुछ कर रहा है जिससे उनको फायदा हो रहा है रिवर के टर्म्स में, तो दैट विल एक्सचेंज द नॉलेज विद अदर कंट्रीज. रिवर सिटी ट्विनिंग, जो रिवर सिटीज होती है उनकी ट्विनिंग. लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया में गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर में लेट्स से वाराणसी है, वाराणसी इज अ रिवर सिटी. एंड लेट्स से देयर इज थेम्स रिवर इन लंदन, राइट, लंदन में थेम्स है ना. सो ये दो सिटीज का ट्विनिंग होगा. दिस टू सिटीज विल कोऑर्डिनेट द एक्शंस फॉर द रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस. ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है, ये डायग्राम में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी. इट इज जस्ट द टाइमलाइन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग. जो एक्टिविटीज हो रही है उन एक्टिविटीज की एक टाइमलाइन दी है फ्यूचर में भी. 2018 से इसको स्टार्ट किया है एंड 2050 तक. ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू गेट कार्बन न्यूट्रल एंड क्लाइमेट रेजिलियंट इन 2050, उसका एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट है रेड एंड रेड प्लस. सी वी आर डिस्कसिंग क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस. याद होगा तो क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन वी स्टार्टेड विद UNFCCC. So we have discussed UNFCCC in detail. What is UNFCCC, how UNFCCC forms. इसके अंदर हमने देखा था COPs होते, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एज वेल. ठीक है, इन द पास्ट एज वेल एज लास्ट 2 years के भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेड एंड रेड प्लस. So these are again under UNFCCC. These are again under UNFCCC. देखिए UNFCCC मैंने ऑलरेडी बोला आपको, क्लाइमेट चेंज अगर आपको रिड्यूस करना है, इमिशंस रिड्यूस करने हैं, तो देयर आर 2 ways. इमिशंस रिड्यूस करने देयर आर 2 ways. पहला वे क्या है, रिड्यूस करना सीधा सीधा. सो देयर इज अ फैक्ट्री, इस फैक्ट्री से इमिशंस हो रहे हैं, आपने इस फैक्ट्री को बंद कर दिया फॉर एग्जांपल, दैट इज वन वे. सेकंड वे इज टू कैप्चर द एग्जिस्टिंग इमिशन दैट आर देयर इन एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में जो एग्जिस्टिंग इमिशन है उनको कैप्चर करना, दैट इज अनदर वे टू रिड्यूस द emissions in the atmosphere. Right now reducing emissions के लिए क्या है फिर, these are the 2 initiatives. reducing emissions from deforestation and forest degradation under, ये किसके अंदर है, UNFCCC. what is the difference between red and red plus? see red क्या है, red is incentive for developing countries, very important, to protect, better manage and save their forest resource. आपको अगर नेचर में जो ऑलरेडी पोल्यूटेंट है, ऑलरेडी इमिशंस है, उनको अगर रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू अ फॉरेस्टेशन. आपको ट्रीज लगाने पड़ेंगे, ट्रीज जंगल फॉरेस्ट से होगा. हु विल कैप्चर द एग्जिस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, फॉरेस्ट विल कैप्चर, राइट. सो if there is incentive for developing countries to protect, better manage and save their forest resource, obviously that will lead to the reduced carbon dioxide in the atmosphere because the trees will be capturing it. So red is basically incentive for protecting the existing forest. ठीक है, now what is red plus? There is a slight difference. Red talks only about protection of existing forest. तो ये प्लस है मतलब रेड से कुछ अधिक है. तो रेड प्लस में क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन तो हो रहा ही है, प्रोटेक्शन है ही, प्रोटेक्शन प्लस एनहांसमेंट. प्रोटेक्शन के साथ साथ एनहांस भी कर रहा है. रेड क्या बोल रहा था, दिस इज अ जंगल, राइट, इन दिस जंगल देयर, लेट्स से देयर आर 100 ट्रीज. सो रेड वाज सेइंग कि आप इस 100 ट्रीज को प्रोटेक्ट करो, राइट. इसके लिए इंसेंटिव, दे वर गिविंग फंडिंग, बेसिकली मनी दे रहे थे, जो भी है. रेड प्लस इज सेइंग इस 100 को तो सेव करो ही, प्लस आप एक्स्ट्रा ऐड भी करो इसमें, लेट्स से आप 20 और ट्रीज लगाओ फॉर एग्जांपल. सो रेड प्लस इंक्लूड इंसेंटिव फॉर पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ कंजर्वेशन. व्हाट इज पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ कंजर्वेशन, ये एग्जिस्टिंग तो है ही, उसमें और ऐड करो, राइट. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड रेड प्लस. डू यू रिमेंबर IUCN का नाम पहले क्या था? इफ यू रिमेंबर, IUCN का पहले नाम था IUPN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, एंड फिर उसका नाम चेंज किया IUCN, कंजर्वेशन ऑफ नेचर. सो प्रोटेक्शन मीन्स जो एग्जिस्टिंग था उसका ही प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन मीन्स एग्जिस्टिंग प्रोटेक्ट करना एंड और नए चीज के लिए बढ़ावा देना. सो यहाँ पे सेम ही है. रेड इज एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को कंजर्व करना, रेड प्लस इज एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को तो कंजर्व करना ही है, बट we need to also ensure that there is new forest that are promoted. Got it? यहाँ पे एक चीज कनेक्ट करनी है आपको. इंडिया का INDC में एक INDC है, इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अंडर पेरिस एग्रीमेंट, है वन ऑफ द
INDC as to capture 2.5 to 3 billion tons of CO2 through additional forest and tree cover by 2030. This is in line with the RED plus. ठीक है. नेक्स्ट बॉडी है आईपीसीसी. आईपीसीसी यहां तक हमने जितनी बॉडी देखी या जितने इनिशिएटिव देते दोज वर रिलेटेड टू यूएनएफसीसी. नाउ दिस इज समथिंग न्यू. इट इज आईपीसीसी. इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. It is an intergovernmental body. It means that of the United Nations. It is the body of United Nations, which is an intergovernmental body. What it means? It means the members are different countries, different governments. Different governments are members. See, whenever there is a word inter means different. जैसे हमने सुना है international. International means different nations. India, Pakistan, Afghanistan, USA, Africa. ये सारे क्या हुआ? International. हमने सुना है इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की, जैसे यूरोप, रशिया, यूरोप, एशिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका. ये क्या हुआ? इंटरकॉन्टिनेंटल. राइट. आपने मिसाइल के बारे में सुना होगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. A missile which can go from one continent to the other continent is called as intercontinental. Right. So inter means when different. Intra means within. जैसे हम बोलते हैं इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, मतलब विद इन अ स्कूल कॉम्पिटिशन. इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मीन्स डिफरेंट स्कूल्स आर हैविंग कॉम्पिटिशन अमंग देमसेल्व्स. ठीक है. सो इंटर, आई एम सॉरी, कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत नीचे मतलब बेसिक जाके पढ़ाता हूँ, बट आई थिंक इट्स ओके. एनी विच वे. सो व्हाट इज इंटरगवर्नमेंटल? इंटरगवर्नमेंटल मीन्स डिफरेंट गवर्नमेंट्स. सो इंडिया का गवर्नमेंट, पाकिस्तान का गवर्नमेंट, यूएसए का गवर्नमेंट, जापान का गवर्नमेंट, चाइना का गवर्नमेंट, ऑल दीज गवर्नमेंट्स आर द members of this body. What is it doing? It is dedicated to providing the world with objective scientific view of climate change, its natural, political, economic impacts and risk, possible response. Basically, it is providing the knowledge. What is doing IPCC? क्या कर रहा है? IPCC is a knowledge providing the knowledge. ठीक है ना? It is providing the knowledge related to the national, political, economic impact. क्या रिस्क है, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए क्लाइमेट चेंज को. सो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो नॉलेज है, दैट नॉलेज इज प्रोवाइडेड बाय आईपीसीसी. इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1988. 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था बाय टू ऑर्गेनाइजेशंस, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. सो दीज टू ऑर्गेनिजम्स केम टुगेदर टू फॉर्म द वर्ल्ड IPCC, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इन 1988. Later it was endorsed by UN General Assembly. 1988 में इसे फॉर्म हुआ. Later UN General Assembly also endorsed this organization. Therefore it is a body under United Nations. याद रखना. IPCC is an organization of government that are members of UN or WMO. Who can become the member of IPCC? Either you are member of United Nations or you are member of WMO or you are member of both of these. अगर आप इन दोनों में से किसी का मेंबर से या दोनों के मेंबर से, then you automatically become the member of IPCC. The IPCC produces reports that contribute to the work of UNFCCC. ये नॉलेज शेयर करने के लिए IPCC कुछ रिपोर्ट्स निकालती है. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर IPCC का कोई रिपोर्ट न्यूज में है तो आपको अच्छे से करना होता है, क्योंकि दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स. सो these reports contribute to the work of UNFCCC. आप UNFCCC के काम में रिपोर्ट हेल्प करते हैं. जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये देखो, ये UNFCCC की समिट हुई. यहाँ पे डिसाइड हुआ हमें नेट जीरो बाय 2050 करना है. आप यहाँ पे हमें 2% से 4% इफिशियंसी बढ़ानी है, रिन्यूएबल एनर्जी ट्राइस करनी है बाय 2030. कहाँ से नंबर आए? रैंडमली है क्या? ये लोग नींद में से उठे और बोले नहीं अभी 2030 तक ऐसे करना है, ऐसा होता है क्या? ऑब्वियसली नॉट. देयर इज सम बैकिंग, साइंटिफिक बैकिंग टू दिस नंबर्स. ये नंबर रैंडमली नहीं आए. ये नंबर आए हैं थ्रू द कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ द IPCC. ऑब्वियसली बाकी भी है, लेकिन IPCC इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द वर्क ऑफ UNFCCC. IPCC has received Nobel Peace Prize in 2007. very important. 2007 का जो नोबेल पीस प्राइज है तो IPCC को मिला था. Got it? नेक्स्ट है IPCC does not carry original research. very important. याद रखना. नॉलेज प्रोवाइड कर रही है थ्रू रिपोर्ट, बट is it carrying the research by itself to prepare this report? No, it is not carrying the research. तो फिर ये रिपोर्ट कहाँ से बन रही है? It is creating this report based on research done by other people. जैसे कि लेट्स से IIT बॉम्बे ने कोई रिसर्च की, उधर अमेरिका में हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च हो रही है, चाइना में कुछ रिसर्च हो रही है, जापान में कुछ रिसर्च हो रही है. तो IPCC क्या करता है? IPCC स्टडीज ऑल दिस रिसर्च एंड बेस्ड ऑन दैट इट प्रिपेयर्स द रिपोर्ट. ठीक है. इट डज नॉट carry any original research. It assesses the published literature
and based on that it prepares its own report. ठीक है, जो बाकी लोग रिसर्च कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये अपना रिपोर्ट बनाती है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रीन इकोनॉमी। व्हाट इज, सो विद दिस वी आर डन विद द क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस। हमने क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे क्लोज कर दिया टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी? इन ग्रीन इकोनॉमी इकोसिस्टम, इकोनॉमी एंड ह्यूमन वेलबीइंग are taken care of. So what is happening? We are taking care of ecosystem, economy and human well-being. So the intersection of these three will be called as green economy. So green economy means economic development by keeping in mind the ecosystem, conservation of ecosystem and human well-being. Simple, ठीक है। मेंस में जनरली इस तरीके के डायग्राम वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। जैसे कि लेट्स से देयर इज क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, यू कैन टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशन इज moving towards or transitioning towards green economy where ecosystem, economy and human well-being are twinned, ठीक है। Got it? United Nation Conference on Human Environment, very important conference. This was the first conference for the environment after Second World War. Second World War के बाद you know that there was a lot of political instability across the globe. There was a Cold War going on between USSR and USA, right? In that context एनवायरमेंट का जो कंसर्न है वो प्रॉप अप होना शुरू हो गए। मेनी एनवायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, इकोलॉजिस्ट हैव रियलाइज्ड दिस फैक्ट दैट वी आर indiscriminately using the environment, and if we keep doing it, there will be a large scale destruction. Even entire ecosystem, entire human life can vanish. Therefore international community started to focus on the environment, and first such effort was the United Nations Conference on Human Environment. Very important, human environment. यहाँ पे एनवायरमेंट के साथ ह्यूमन वर्ल्ड भी ऐड है, याद रखना। इट वॉज हेल्ड इन स्टॉकहोम, स्वीडन इन 1972। वेरी इंपॉर्टेंट। इट मार्क द इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल के लिए इंटरनेशनल लेवल पे लॉ का जो जेनेसिस है दैट स्टार्टेड विद दिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इन दिस कॉन्फ्रेंस देयर वाज अ डिक्लेरेशन व्हिच वाज कॉल्ड एज स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। क्या बोलता है ये डिक्लेरेशन? इट सेज दैट the principles for various international environmental issues, natural resource management, pollution prevention and relationship between the environment and development were set out in this Stockholm Declaration. क्या क्या चीजें? रिसोर्स मैनेजमेंट, पोल्यूशन, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो बेसिकली एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन सभी के लिए कुछ प्रिंसिपल इस डिक्लेरेशन में डिक्लेयर किए गए थे। यू डोंट नीड टू नो दिस प्रिंसिपल्स इन डिटेल, ठीक है। बस आपको याद रखना है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट वाज हेल्ड इन 1972 इन स्टॉकहोम। जहाँ पे एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आया था वेयर द प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द डिफरेंट एनवायरमेंटल इश्यूज वेयर सेट आउट, ठीक है। एंड दिस वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस व्हिच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, ठीक है। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 20 साल बाद 20 years आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस another conference was held which is called as United Nation Conference on Environment and Development. It was held in Rio de Janeiro, जिसे अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है, इन 1992। ये हमने ऑलरेडी देखा था UNCED, ठीक है। याद रखना इसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट 1972 एंड देन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। पहला स्टेटमेंट दिया कुछ तो भी, दूसरा स्टेटमेंट दिया कि CBD वाज साइंड इन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन एनवायरमेंट, एंड यू विल बी लाइक हाँ बराबर है, बट इट इज नॉट ह्यूमन एनवायरमेंट। ये 1972 वाली कॉन्फ्रेंस का नाम है, 1992 वाली कॉन्फ्रेंस का नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। बार पढ़ते रहना है, बार रिवाइज करना है, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, ठीक है। हमने इतनी बार देखा है, आपको तो याद हो गया होगा कि UNCED इज रिवर समिट, ठीक है। दिस UNCED रिजल्टेड इन द साइनिंग ऑफ 3 डॉक्यूमेंट्स। 3 डॉक्यूमेंट इसमें साइन किए गए थे। पहला था रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, नाम ही है एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो बेसिकली एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसा करना है, इसलिए रियो डिक्लेरेशन। एजेंडा 21 ऑलरेडी बताया था, इट वाज अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू एंजॉय द natural resources is called as sustainable development. There was an action plan related to the sustainable development in the form of Agenda 21. Then there are forest principles. These are for the conservation and sustainable development of forest. Forest के लिए कुछ principles declare किए गए थे for conservation and sustainable development. There were important agreements which were signed in UNCED. Which were these agreements?
Convention on Biological Diversity, CBD. It is for the conservation of biodiversity. Then Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. It is for the climate change. And then UN Conference to Combat Desertification. It was related to the desertification. So these three agreements were signed in UNCED, and these three documents were also signed in CED. ये 6 चीजें आपको याद रखनी है. Moving ahead, as a follow-up to UNCED के follow-up के दौर पे वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट was arranged in 2002 in जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका. इसे रियो प्लस 10 बोलते हैं. क्यों? रियो के 10 साल बाद हुआ, 2002 में. ठीक है. देन रियो प्लस 20 हुआ, मतलब रियो समिट के 20 साल बाद देयर वाज अनदर फॉलोअप कॉन्फ्रेंस विच इज कॉल्ड एज यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. ये वर्ल्ड समिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है प्लस 10 में. प्लस 20 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड. ठीक है. नेक्स्ट है साइट्स. साइट्स इज बेसिकली कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना. ठीक है. सबसे पहले याद रखना है, इट इज फॉर बोथ फौना एंड फ्लोरा, मींस बोथ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स आर कवर्ड इन साइट्स. ठीक है. दिस कन्वेंशन इज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया बाय द रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ डब्ल्यूपीए अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत साइट्स के जो प्रोविजन है वो डब्ल्यूपीए एक्ट में ऐड किए गए हैं. राइट. नाउ दिस जो साइट्स के जो प्रोविजंस है दोज आर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन इंडिया बाय रिसेंट अमेंडमेंट्स ऑफ डब्ल्यूपीए. इवन इफ यू रिमेंबर, डब्ल्यूपीए में जो शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 4 इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हिच आर देयर इन साइट्स. ठीक है. नाउ साइट्स का काम क्या है? इट इज बेसिकली कंट्रोलिंग द ट्रेड इन endangered species of wild flora and fauna. I already told you. Let's say there is some animal या plant. Let's take example of elephants. राइट. एलिफेंट्स. सो एलिफेंट्स के जो टस्क होते हैं, एलिफेंट्स के जो बाहर वाले टीथ्स होते हैं, जिन्हें आइवरी भी बोलते हैं. सो यू नो दैट द आइवरी ऑफ एलिफेंट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड आइटम्स. सो मेनी एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर दिस आइवरी. राइट. एंड फिर ये आइवरी गेट्स एक्सपोर्ट इन कंट्रीज लाइक चाइना, इन अफ्रीका. राइट. सो इस आइवरी का जो ट्रेड है, अगर आपने ट्रेड खत्म कर दिया तो ऑब्वियसली पीपल वोंट किल दिस एलिफेंट, क्योंकि वो आइवरी को खरीद ही नहीं रहा है. सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द साइट्स कि यहाँ पे ट्रेड को कंट्रोल किया है. सो ट्रेड को कंट्रोल किया तो बायोडाइवर्सिटी विल ऑटोमेटिकली गेट कंजर्व्ड. दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइट्स. ठीक है. इट इज ओनली ट्रीटी टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल इन द वाइल्ड. राइट. ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मैंने. साइट इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. ठीक है. याद रखना है, फैक्ट है. सो दिस इज ऑल अबाउट द साइट्स. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन. इसका वीडियो मैंने अपलोड किया था. आई विल अपलोड इट इन द पोर्टल. लेक्चर के बाद पोर्टल पे ये वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना. ठीक है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कन्वेंशन. सो इसी तरीके से देखो, साइट्स पे आपको पीएचडी नहीं करनी है, इतना ही पढ़ना है. इसका अलावा अगर कुछ करंट अफेयर्स में अगर साइट्स का कुछ आया है तो आपको पता होना चाहिए. सो दीज थिंग्स आर इनफ फॉर यू टू कवर द एक्ट्स एंड पॉलिसीज इन डिटेल. ठीक है. नेक्स्ट है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस जैसे बेसल कन्वेंशन वाज कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ hazardous waste and their disposal. What happens? There is a hazardous waste, let's say in America. So America export this waste to some country like Bangladesh. Right? These are the hazardous waste. It can be, let's say, it can be old electronic items. So electronics items where there are many hazardous substances. Like there is mercury, maybe there are some chemicals that are used, right? So America is exporting this to the Bangladesh. Now there need to be some control in this movement, right? क्योंकि आप transboundary movement कर रहे हैं, hazardous waste. So there needs to be certain protocol, there need to be certain rules for exporting such kind of hazardous items, right? It aims at preventing and minimizing the generation of waste, including those ending up in ocean, right? So इसका एक aim है कि जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड जो ओशन में चला जाता है उसका प्रिवेंट करना या मिनिमाइज करना. एक चीज याद रखनी, डज नॉट कवर रेडियो एक्टिव वेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. बेसल कन्वेंशन डज नॉट कवर द रेडियो एक्टिव वेस्ट. बेसल कन्वेंशन डील्स विद समथिंग कॉल्ड एज निम्बी सिंड्रोम. निम्बी सिंड्रोम इज नॉट इन माय बैकयार्ड. मतलब क्या? लेट्स से आप यहाँ पे रहते, आपका ये बैकयार्ड है. बैकयार्ड इन द सेंस घर के सामने की जो खाली जगह है या पीछे की. सो आपका ये घर है, घर के यहाँ पे खाली जगह पड़ी है, आपने साफ की, पूरी साफ सफाई की और साफ करके आपने क्या किया, ये सारा कचरा आपके घर के बाजू में डाल दिया.
सो इज इट राइट थिंग टू डू? ऑब्वियसली नॉट, बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे अमेरिका अपना कचरा बांग्लादेश को दे रहा है फॉर पिटी रीजन। बांग्लादेश क्यों ले रहा है? क्योंकि बांग्लादेश को लग रहा है कि इस कचरे में जो वैल्यू है, राइट, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिसेमिनेट करके कुछ स्पेयर पार्ट मिलेंगे एंड वो सेल करके हम कुछ हमारी रोजी रोटी चला सकते हैं, राइट। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल बाय विच द hazardous waste is getting transported from majoritarily from developed country to the developing countries. To control such movements, Basel Convention was signed. ठीक है? There was a Basel ban amendment which came recently, which prohibits all export of hazardous waste, including electronic waste and absolute ships. Absolute ships means जो खराब हुई ships है, from the 29th wealthiest countries of OECD. OECD करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 29 मेंबर्स है. These are the most powerful and most economically developed countries in the world. So generally OECD से जो एक्सपोर्ट होता है hazardous waste का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, शिप्स है, एक्सेट्रा, टू द नॉन ओईसीडी कंट्रीज, मतलब बांग्लादेश, इंडिया जैसे कंट्रीज, उन्हें बैन करने के लिए बेसल बैन अमेंडमेंट लाया गया था. इंडिया हैव नॉट रेटिफाइड दिस अमेंडमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने अमेंडमेंट रेटिफाई नहीं की है फॉर द सिंपल रीजन. क्यों? क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट शिप्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो बैन किया है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द मेजर हब ऑफ द डिसमेंटलिंग ऑफ एब्सोल्यूट शिप. इंडिया में एब्सोल्यूट शिप्स जो है वो डिसमेंटल की जाती है बड़े पैमाने में. गुजरात में वगैरह बड़े बड़े फैसिलिटीज हैं जहाँ पे जो बहुत बड़ी शिप्स होती है जो अभी मतलब खराब हो गई है, तो उनको डिसमेंटल किया जाता है. ठीक है? सो ऑब्वियसली इफ वी साइन दिस और रेटिफाई दिस बेसल बैन अमेंडमेंट, हमारी वो इंडस्ट्री, एंटायर शिप डिसमेंटलिंग इंडस्ट्री विल गेट लॉस. वो एंटायर इंडस्ट्री एक दिन में वाइप आउट हो जाएगी. देयरफॉर इंडिया हैव नॉट साइन दिस अमेंडमेंट. ठीक है? Environmentally it is not right to not sign, but we have to balance the environment and डेवलपमेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि नहीं, अगर ये किया तो ठीक है, एनवायरमेंट सेव होगा, एनवायरमेंट के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, हमारे हजारों करोड़ों लोगों, हजारों लाखों लोगों के रोजगार खतरे में आ जाएंगे. देयरफॉर टू बैलेंस दिस टू थिंग्स, इंडिया हैव नॉट रेटिफाइड दिस अमेंडमेंट. चलो लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. याद रखना, दिस इज द कन्वेंशन फॉर विच ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी पैसे देती है, याद है ना. सो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, इसे शॉर्ट फॉर्म में पीओपीज बोलते हैं. सो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मींस दोस पोल्यूटेंट्स व्हिच रिमेन इन एनवायरमेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. लाइक फॉर एग्जांपल, हमने, डू यू रिमेंबर, हमने कॉन्सेप्ट देखा था बायो एक्युमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन. तो वहां पे जो पोल्यूटेंट्स है, उस टाइप के पोल्यूटेंट्स को बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. द पोल्यूटेंट्स व्हिच परसिस्ट, व्हिच स्टे इन एनवायरमेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. दिस इज अ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन, याद रखना है, अंडर यूएनईपी. यूएनईपी के अंडर आता है. देयर आर टोटल 30 पीओपीज व्हिच आर बैंड अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन. 30 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का यूज बैन किया गया है. इनमें सबसे पहले 12 बैन किए गए थे. जब ये साइन किया तब 12 थे, बाद में 30 हुए. इनिशियल नंबर वाज 12. सो दिस 12 पीओपीज दैट आर मोस्ट डेंजरस एंड व्हिच वर कंसीडर्ड इन द beginning are considered as dirty dozens. So there can be a simple statement, dirty dozen refers to, and there will be different statement. One of the statement will be 12 persistent organic pollutants which are considered as most dangerous. So ऐसे याद रखना है आपको. It includes something called as dioxins. Dioxin is a persistent organic chemical, एक example है. ठीक है? Then next is Rotterdam Convention. Rotterdam Convention is for hazardous chemicals. So the convention promotes open exchange. अगर आपको hazardous chemical एक simple language में याद रखिए, let's say country A want to export some chemical, hazardous chemical, to country B. यहाँ पे country B को ये export कर रहा है. So there need to be, country A need to communicate country B that we are exporting this hazardous chemical in your country. इसमें एक proper label होनी चाहिए, जिसमें direction of safe handling होनी चाहिए, and inform purchaser of the known risk. If there is any ban on this chemical, अगर इस chemical पे कहीं पे ban है, तो that needs to be informed to the country B, and restrictions भी है तो वो भी communicate करने होते हैं. ठीक है? It created something called as prior informed consent process. It means that country B will be informed prior, इनसे कंसेंट लिया जाएगा कि भाई ये केमिकल डेंजर है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसे हैंडलिंग करने की ये प्रोसीजर है, इस पे ये बैन है, एंड नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग, आर यू अलाउइंग द एक्सपोर्ट? देन कंट्री बी विल से यस वी आर अलाउइंग. सो इसे कहते हैं प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट. पहले से इन्फॉर्म करके कंसेंट लेना. ठीक है? प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट. ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रोटरडैम कन्वेंशन क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट. ठीक है? आपने देखा होगा जनरली कोई भी केमिकल का डब्बा अगर आप लेंगे, कोई भी केमिकल ले लो, उसमें लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, डेंजर का साइन होता है. आपने देखा हो जो भूत का जो साइन होता है,
वो डेंजर का साइन होता है, राइट। सो ऑल दिस लेबलिंग इज डन ड्यू टू द रोटरडैम कन्वेंशन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये चीजें आपको मल्टीपल टाइम्स एक एक लाइन में आप एक सिंगल पेज पे लिख के रखिए, जैसे कि ये देखो, बेसल कन्वेंशन, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस, ठीक है। देन रोटरडैम, रोटरडैम, रोटरडैम क्या है? हजार्डस केमिकल्स, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। देन देर इज स्टॉकहोम, स्टॉकहोम क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो इस तरीके से आपको एक एक लाइन में लिख के रखना है और अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है, कीप रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है होनोलुलु स्ट्रेटेजी। होनोलुलु स्ट्रेटेजी इज द फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल collaborative efforts to reduce ecological, human health and economic impact of the marine debris. सिंपल है, होनोलुलु स्ट्रेटेजी इज फॉर मरीन डेब्रिस, ठीक है। नेक्स्ट है कोलंबो डिक्लेरेशन। कोलंबो डिक्लेरेशन इज फॉर द sustainable nitrogen management. Its ambition is to halve the nitrogen waste by 2030. So nitrogen based जो भी वेस्ट है उसका अमाउंट हाफ करना, जैसे कि एग्जांपल है अमोनिया, अमोनिया इज अ नाइट्रोजन वेस्ट। सो अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट का जो अमाउंट है वो प्रेजेंट लेवल से हाफ करना बाय 2030 इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोलंबो डिक्लेरेशन। सो कोलंबो डिक्लेरेशन नाइट्रोजन मैनेजमेंट, इतना याद रखना है। इट इज अगेन ऑफ यूएनईपी। नायरोबी कन्वेंशन, Nairobi Convention is a partnership between government, civil society, and private sector working towards prosperous Western Indian Ocean region with healthy rivers, coast and ocean. ये किसके लिए? It is for the Western Indian Ocean. देखो, this is India, this is Africa, this is Australia. So ये पूरा क्या है? This is a Indian Ocean. Indian Ocean का ये जो पार्ट है, this is a Western Indian Ocean. So ये जो पार्ट है, इस पार्ट में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए नायरोबी कन्वेंशन साइन किया गया है, ठीक है, याद रखना। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ नायरोबी कन्वेंशन, इंडिया नहीं, इंडिया वेस्टर्न इंडियन ओशन में नहीं आता। मिनामाटा कन्वेंशन इज ऑन मर्क्यूरी। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक इमिशन एंड रिलीज ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, सिंपल है। मिनामाटा कन्वेंशन आपको याद रखना है, इसकी भी फंडिंग कहां से आती है? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी से, ठीक है। नेक्स्ट है वियना कन्वेंशन वाज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। अंडर वियना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ साइन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ साइन, ठीक है, याद है ना? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने डिटेल में देखा था, जिसको याद नहीं जाके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिर से पढ़ लेना। मूविंग अहेड, नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना, वाइल्ड एनिमल्स। इट इज कॉल्ड एज सीएमएस, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉर्न कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉर्न कन्वेंशन इज फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी स्पीसीज हमने अभी याद करो, हमने एडेप्टेशन देखा था, एडेप्टेशन में हमने देखा था there are some animals which are able to regulate, for example human beings. Then there are some psychological, physiological and morphological adaptations, जैसे हमने देखा था डेजर्ट के प्लांट्स के लीव्स में कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। देन हमने देखा था सम ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट, राइट। सो माइग्रेट करते हैं फॉर देयर फॉर इंश्योरिंग दैट कि दे आर एबल टू लिव और सर्वाइव इन चेंजिंग इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ, स्नोफॉल चेंज हुआ, रेनफॉल चेंज हुआ, उस अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर पाए। इसलिए देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स which migrate. For conservation of such migratory species, convention on migratory species was signed, which is also called as Bonn Convention. इसका भी हर साल सीओपी होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। 13 सीओपी वाज हेल्ड इन गांधीनगर, दैट इज इन इंडिया, ठीक है, 2-3 साल पहले की बात है। इट इज अंडर द एजिस ऑफ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर ही आता है। इट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइग्रेटरी एनिमल्स एज वेल एज उनके हैबिटेट्स का कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज की बात बॉर्न कन्वेंशन में की गई है। इट ब्रिंग्स टुगेदर द स्टेट्स थ्रू विच माइग्रेटरी एनिमल्स पास, इसे कहते हैं रेंज स्टेट्स। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि एक बर्ड है, वो यहाँ पे रशिया है और यहाँ पे इंडिया है। सो ये रशिया से इंडिया आ रहा है और इंडिया से फिर से रशिया जा रहा है, राइट। बट ऑब्वियसली रशिया और इंडिया के बीच में देयर आर मेनी कंट्रीज, यहाँ पे इंटायर मिडिल ईस्ट आता है, यहाँ पे चाइना आता है। सो ऑब्वियसली दिस बर्ड्स आर गोइंग थ्रू दिस कंट्रीज। मिडिल ईस्ट से सॉरी सेंट्रल एशिया से आ रहा है, नॉट मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, अदर या तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऑल दिस कंट्रीज आर देयर। सो दिस बर्ड इज मूविंग थ्रू दिस कंट्रीज। सो इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द कंट्रीज थ्रू विच दिस बर्ड इज मूविंग। आपने रशिया में इसको प्रोटेक्ट किया और इंडिया में किया और यहाँ पे नहीं किया तो क्या फायदा? ये बर्ड यहाँ पे बीच में रुकेगा ही ना, ये कंटिन्यूसली थोड़ी फ्लाई करेगा।
ये फ्लाई करके तजाकिस्तान में आएगा, तजाकिस्तान में रुकेगा रात भर के लिए, और यहाँ पे अगर ये हम उसको हो रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट इन सेविंग इट इन इंडिया एंड रशिया. देयरफॉर एंटायर countries from which it is moving are coming together to save these migratory species. CMS is the only global United Nations based organization for conservation and management of the migratory species. Migratory species के लिए this is the only initiative. ठीक है. These migratory species can be obviously terrestrial, right? Terrestrial. So जमीन से जो migrate करते हैं, for example elephants. Then it can be aquatic. एक्वेटिक जैसे कि ऑलिवरेडली टर्टल्स, या फिर एवियन. एवियन मींस बर्ड, एवियन मींस बर्ड. ठीक है. इंडिया हैज साइंड अ नॉन लीगली बाइंडिंग एमओयू विद सीएमएस. इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ 3 स्पीसीज. कौन कौन से? साइबेरियन क्रेन, मरीन टर्टल्स, सॉरी 4 है, डुगोंग्स एंड रैप्टर्स. याद रखने चारों नाम. इन चारों के कंजर्वेशन के लिए इंडिया ने एक एमओयू इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो इंडिया एंड सीएमएस हैव साइंड दिस नॉन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट where there is an understanding between India and Bonn Convention that India will conserve and manage these 4 species: Siberian cranes, marine turtles, dugongs and raptors. ठीक है. Got it? Here is a map of some of the important flyways. So this is the, let's say, Central Asian flyway. ये देख रहा है आपको, ये जो पूरा एरिया है ग्रीन कलर के, इसमें जो एरिया है, दिस इज अ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. इट मींस दैट बर्ड्स बेसिकली माइग्रेट इन दिस एरिया. यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है. सो दिस इज द रूट विच इज देयर फॉर द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. इसी तरीके से दुनिया में अलग अलग फ्लाईवेज है वेयर बर्ड्स आर सीन फ्लाइंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स. यहाँ पे आप देखिए, ये अटलांटिक अमेरिकन फ्लाईवे, यहाँ पे राइट फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये साउथ का जो साउथ अमेरिका का जो सदर्न पार्ट है, ये पूरे एरिया में देयर आर सम बर्ड्स विच आर माइग्रेटिंग. ठीक है. नेक्स्ट है यूएन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. इसे यूएनसीसीडी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. इट इज अ सोल लीगली बाइंडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूएनसीसीडी इज लीगली बाइंडिंग ट्रीटी विच लिंक्स एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू द सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. अभी तक हम जितनी बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी की, बर्ड्स की, एनिमल्स की, वेयर एज यूएनसीसीडी इज अ एग्रीमेंट which is legally binding and which links environment with the sustainable land management, because ultimately for conservation of biodiversity, for conservation of wild flora and fauna, you need to ensure that the land is pollution free, the land is managed properly. ठीक है. The convention specifically addresses the dry lands. Dry lands means the lands where water availability is very low, which includes arid. Arid means basically the land where पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं, desert lands. सेमी एरिड मींस पानी कम अवेलेबल है. ठीक है. एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ के जो लैंड है. ठीक है. व्हाट इज द गोल? गोल इज टू मेंटेन एंड रिस्टोर लैंड एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी. क्या ऑब्जेक्टिव है? लैंड एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना या रिस्टोर करना. एंड टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट. ड्रॉट के जो इफेक्ट्स है उनको मिटिगेट करना, रिड्यूस करना. इसमें बॉटम अप अप्रोच कंसिडर किया जाता है, वेयर द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इज encouraged in combating the desertification and land regeneration. Very very important. टॉप अप एंड बॉटम अप दो अप्रोच होते हैं. टॉप अप अप्रोच मींस ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है एंड वो नीचे लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए बोल रहा है. वेयर एज बॉटम अप अप्रोच मींस लोकल पीपल को इन्वॉल्व किया गया जा रहा है इन डिसीजन मेकिंग. जैसे हमने देखा है फॉरेस्ट राइट एक्ट इज हैविंग अ बॉटम अप अप्रोच. देन देयर आर मेनी अदर प्रोविजंस जहाँ पे लोकल पीपल को इन्वॉल्व किया जाता है. सो व्हेनेवर देयर इज द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, इट इज कॉल्ड एज बॉटम अप अप्रोच. अगर कोई भी इश्यू सॉल्व करना है तो बॉटम अप अप्रोच इज कंसिडर्ड एज मच मोर सुटेबल. क्यों? क्योंकि लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम्स इन बेटर वे. इफ यू इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग, then you can take a better decision, then the policy can be implemented in better way. Therefore UNCCD follows the bottom up approach. Next है UNCCD collaborates closely with other 2 Rio conventions. आपको याद होगा रियो अर्थ समिट जो हुई थी, जिसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट बोलते हैं. इसमें 3 कन्वेंशन साइन हुए थे. कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, दिस इज फॉर बायोडाइवर्सिटी. UNFCCC, so United Nations Framework Convention to combat United Nations Framework Convention on Climate Change, and lastly UNCCD, United Nations Convention to combat desertification. Right? So basically ये जो UNCCD है, it also collaborate with these other 2 conventions. ठीक है. नेक्स्ट है इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इसके अंडर एक चैलेंज आता है जिसे बोलते हैं बॉर्न चैलेंज.
So bond challenge is a global effort towards bringing 150 million hectares of world's degraded and deforested lands under restoration by 2020 and 350 million hectares by 2030. याद रखना है, bond challenge is regarding restoration of land, डिग्रेडेड एंड डिफोरेस्टेड लैंड का रिस्टोरेशन। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बॉन्ड कन्वेंशन है, बॉन्ड कन्वेंशन इज फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज, बॉन्ड चैलेंज इज फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ लैंड। याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। Let's discuss the last topic of environment and ecology, that is environment impact assessment. This topic is very important for mains. प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, सो प्रीलिम्स के लिए जस्ट कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। बाकी इसका जो बाकी जो फैक्टर होते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन ईआईए, उसको कैसे रेक्टिफाई करना चाहिए, ईआईए को बेटर वे में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द एरियाज वेयर देयर कैन बी क्वेश्चन इन मेंस। दीज एरियाज विल बी कवर्ड इन द यूपीएससी एडवांस कोर्स, जो हम प्रीलिम्स के बाद एक कोर्स लेते हैं यूपीएससी एडवांस, उस कोर्स में वो सारी चीजें कवर होगी। बट प्रीलिम्स के लिए हमें बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। सो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या होता है? सो इट इज अ, पहले तो what is EIA? EIA is a tool used to identify environmental, social, economic impacts of a project prior to a decision making. कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए एक टूल है जिसे EIA बोलते हैं। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ EIA इज आल्सो गिवन बाय UNEP। ये कॉन्सेप्ट भी किसने दी है? UNEP ने दी है। सो होता क्या है, देखो सिंपल है, मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया था आपको जब सिलेबस डिस्कस किया था। लेट्स से देयर इज अ सिटी ए, देयर इज अ सिटी बी, वी आर बिल्डिंग अ रोड बिटवीन दिस टू सिटीज, ठीक है, इन दो सिटी में ये रोड बिल्ड हो रहा है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग व्हाइल बिल्डिंग दिस रोड, देयर विल बी सम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, right? There will be some social impact and there will be some economic impacts. So to assess or identify the social, environmental and economic impact of this project is called as environment impact assessment. What can be the environmental impact? So let's say there is some forest in this area, there is some wildlife in this area, that forest, that wildlife can be under threat. Even if there is no forest, let's say कोई forest नहीं, खाली जगह है, right? Then also there can be some trees, भले ही खाली जगह लेकिन पेड़ तो हर जगह होते हैं ना। सो लेट्स से इस हाईवे बिल्ड करने में आपको 1000 ट्रीज कट करने पड़ रहे हैं, सो दैट इज आल्सो एनवायरमेंट इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट, देयर कैन बी सम विलेजेस हियर, यहाँ पे कोई विलेज हो सकता है, इस विलेज के बीच से सड़क जा रही है, तो ऑब्वियसली द लाइफ ऑफ दिस विलेज विल बी चेंज्ड, राइट? सो दैट इज अ सोशल इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट मींस द इकोनॉमी ऑफ दिस एंटायर रीजन विल चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं, राइट? सो दीज आर द इम्पैक्ट्स व्हिच वी नीड टू आइडेंटिफाई बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। याद रखना है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, इट इज प्रायर टू द डिसीजन मेकिंग। पहले एआईए किया जाता है, बाद में बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ दैट एआईए डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? पहला है आइडेंटिफाई, प्रेडिक्ट एंड इवैल्यूएट इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, राइट? आइडेंटिफाई करना। सेकंड है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डिसीजन मेकिंग। आप जो डिसीजन ले रहे हैं, लेट्स से अ मिनिस्टर इज टेकिंग डिसीजन, अ आईएएस ऑफिसर इज टेकिंग डिसीजन, that officer should have the complete knowledge before कि क्या क्या impact हो गए, right? So that knowledge is provided by EIA. Promoting environmentally sound and sustainable development by identifying appropriate alternative or mitigation measures. So it is not just identifying the problems, ये बस आइडेंटिफाई करके खत्म नहीं होता है, या फिर अल्टरनेटिव भी देते हैं। अगर लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, so there can be some alternative, बोल सकते कि ये रोड की जगह पे आप ऐसा बनाओ, ये अल्टरनेटिव रूट है, इस तरीके से बनाओ, राइट? सो ये प्रपोज ये था, लेकिन EIA के बाद सजेस्ट किया गया कि यहाँ पे ज्यादा नुकसान हो रहा है, कंपैरेटिवली इस रूट पे नुकसान बहुत कम होगा, तो रेदर देन दिस रूट ये कैंसिल करके यहाँ पे बनाओ, राइट? सो अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया। या फिर देयर कैन बी मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब क्या? यहाँ पे ये रोड बन रहा है, राइट, यहीं पे बनाओ, लेकिन लेट्स से यहाँ पे जो विलेजर्स है, इन विलेजर्स की सोशल फैब्रिक ब्रेक हो रहा है, तो इनको किसी और जगह पे आप रहने के लिए जगह दो, राइट? या फिर यहाँ पे ट्रीज कट हो रहे हैं, यहाँ पे 1000 ट्रीज कट हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप किसी और जगह पे 2000 ट्री लगाओ। सच काइंड ऑफ मिटिगेशन मेजर्स या फिर अल्टरनेटिव्स कैन बी प्रोवाइडेड आफ्टर द EIA, ठीक है। देयर आर सम स्टेप्स इन EIA। सबसे पहली स्टेप है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में इज स्टेप टू डिटरमाइन वेदर EIA इज रिक्वायर्ड और नॉट। सी, EIA हर प्रोजेक्ट के लिए नहीं करते हैं, राइट? लेट्स से एक रोड है, एक रोड ऑलरेडी है, इस रोड को आपको थोड़ा चौड़ा करना है, थोड़ी सी उसकी साइड, दोनों साइड से 10-10 फुट बढ़ाना है फॉर एग्जांपल, मे बी वहां पे EIA की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सो सबसे पहले स्क्रीनिंग में ये डिटरमाइन होता है
कि is there a requirement of EIA or not. Then scoping में basically identify the key issues and impact that should be further investigated. Now आप randomly भी EIA नहीं कर सकते, आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या इश्यूज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि इज देयर एनी फॉरेस्ट, आर देयर एनी कम्युनिटीज, आर देयर एनी ट्राइबल्स, is there any social consequences. So such kind of issues needs to be first identified in scoping stage, and then those issues are further investigated in the impact analysis stage, where this impact analysis stage identifies and predicts the environmental and social impact of this project. ठीक है. Then mitigation, some measures are recommended to reduce or avoid the potential environmental consequences. Then reporting, then a report is formed and that report is presented. This report is also presented to the people who are stakeholders. तो इस प्रोजेक्ट में जो भी पीपल स्टेक होल्डर है उनको भी ये रिपोर्ट दिया जाता है इन समथिंग कॉल्ड एज पब्लिक हियरिंग. इन पब्लिक हियरिंग, पब्लिक एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स लिविंग क्लोज टू द प्रोजेक्ट साइट में बी इन्फॉर्म्ड एंड कंसल्टेड. इनको बताया जाता है और इनसे कंसल्ट किया जाता है बिफोर फाइनलाइजिंग. देन EIA इज रिव्यूड. इट एग्जामिन्स एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ EIA. इसमें रिव्यू किया जाता है कि ये EIA रिपोर्ट एडिक्वेट है क्या, इफेक्टिव है क्या, नहीं है, राइट. देन डिसीजन मेकिंग, बेस्ड ऑन ऑल दी स्टेजेस फाइनली अ डिसीजन इज टेकन वेदर द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और नीड्स सम चेंजेस. इन तीनों में से एक डिसीजन लिया जाता है कि यस प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड, प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड और प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड विद सर्टेन चेंजेस. ठीक है. एंड पोस्ट मॉनिटरिंग, दिस स्टेज कम इनटू प्ले वंस द प्रोजेक्ट इज कमीशन. जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तब पोस्ट मॉनिटरिंग स्टेज चालू होती है. इट चेक्स दैट whether the project is following the legal standard and the अगर कोई implementation में mitigation measures suggest किए गए थे, क्या वो mitigation measures अच्छे से implement हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये सारी monitoring होती है post monitoring stage में. So this is basics of the environment impact assessment. I hope you have enjoyed the sessions thoroughly. Okay guys, then we will end the session here. Thank you.